Hi guys, I'm sorry. थोड़ा late हो गया. Technical issues. Wi-Fi. I got shifted to a new house and यहाँ का थोड़ा Wi-Fi का issue है. So was fixing that and was setting up my desktop and everything. Okay. Uh, Tomorrow onwards, देखो, tomorrow onwards I'll go to my home. Okay. So like whatever classes you can be, like it can be possible from any time, right? It could be from 8:30 or 8 according to you guys. Okay. तो एक और बार आई रिलीज अ पोल. ठीक है, सो यू गाइस डिसाइड कि कब करना है एंड वी कैन डू इट. ठीक है, तो 8 सेम स्कूल बट लेट्स सी. ठीक है, नोन पे तो नहीं हो पाएगा यार. लाइक काफी लोग जॉब करते हैं, मुझे भी जॉब करना है खुद. तो नोन पे तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. 8 या 8:30 दैट यू नीड टू डिसाइड. ठीक है, आई एम फाइन विद बोथ द थिंग्स. 8:30 बेटर है मेरे लिए, सच बताऊं तो, बिकॉज आई डोंट हैव टू, मतलब जल्दी निकलना नहीं पड़ता काम से. बट लेट्स सी. It's not new home, rent पे लिए थे हम, right? So we'll see guys, don't fight over this. So yeah, we are going to start bit manipulation today. Completely different topic. ठीक है, मतलब completely different topic. अब तक ये चीज तो देखा ही नहीं होगा most of the people. ठीक है, so be excited. ठीक है, इस चीज सीखने के लिए. एंड अब मोस्टली, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा अगर, ठीक है, डू लेट मी नो. ठीक है, वी कैन स्टॉप राइट देयर एंड जितना प्रोसेस कर पा रहे उतने करेंगे, बाकी पुराना उसका क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है ना. Hinged element with constant pace. Yeah, we can do that. No worries. So yeah, we have the class. So I'm saying कि office timings, as I told, it's very flexible. Okay, I can log in at any time. I can log out at any time. There's one meeting that is called Scrum meeting. Okay, stand up बोलते हैं. Okay, it basically says कि like 5 minutes के लिए you should give your updates कल क्या किया, right? Only that is the only thing. एक बार गूगल कर लेना स्क्रम करके, स्क्रम. ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा स्क्रम में कैसे होता है, टास्क कैसे, एलोकेशन कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, कंप्लीशन तक का एंड ऑल. ठीक है, तो वही होता है. मैं तो काफी लेट जा रहा हूँ, काइंड ऑफ 1 o'clock के आसपास जाता हूँ ऑफिस. तो लेट हो जाता है, बट आई नीड टू इम्प्रूव दैट. ठीक है, तो अभी घर पे जाने वाला हूँ, तो वर्क होने वाला है. तो लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम 9 to 10. 9-10 के आसपास स्टार्ट करूंगा एंड 5 o'clock 6 o'clock तक खत्म कर दूंगा. एंड देन आई हैव सम टाइम एंड देन द क्लास. ठीक है, ओके. सर हैशिंग में मेरे से न्यू क्वेश्चंस में अप्रोच नहीं लग रहा, पता ब्रो. मोहम्मद, आई थिंक हैशिंग के लिए, लाइक ब्रो, एज यू नो, हैशिंग का बहुत ज्यादा theory नहीं है, राइट? वट एवर द theory is, it's very limited. ठीक है, so what you can do is just try the simple questions. ठीक है, just try to understand how you're basic forming the frequency thing, how you're basically forming the like index thing and able to access it. ठीक है, just try to feel the need of a hashing, only then you can do the questions. ठीक है, तो simple questions से start करना. अगर like it's obvious that कि थोड़े लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़े लोग अभी भी कंफ्यूज है इस चीज को लेकर. ठीक है, so I know that, I feel that, but so there's only one way कि धीरे धीरे like do the simple questions and then try to rewatch the recordings and all. ठीक है, that's the only way, man. Like I can't find any other way to do this thing or approach this thing. ठीक है, so I think let's get started, guys. ठीक है, so like let's revise whatever we learned yesterday and then I'll open a new PPT. ठीक है, which says what is the thing you can do, right? Let me share my screen. Where is my screen? Discord guy. Okay. We can do that actually. लेकिन देखो सवेरे, लेट मी बी ऑनेस्ट. ठीक है, सवेरे क्वेश्चंस, राइट, उसमें लाइक इफ यू आर एबल टू बाइफरकेट कि तुम्हें क्या करना चाहिए. ठीक है, सब क्वेश्चंस एक जैसे दिखते हैं बट एक कॉन्सेप्ट के नहीं होते. ठीक है, सो अगर कोई बोला कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ सब सीक्वेंस, ठीक है, तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि इट्स नॉट अ स्लाइडिंग विंडो, बिकॉज स्लाइडिंग विंडो में कंटिन्यूअस होना चाहिए. इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सब सीक्वेंस, ठीक है, सवेरे बोला तो स्लाइडिंग विंडो लग सकता है. ठीक है, तो
सो सवेरे बोला स्लाइडिंग विंडो लग सकता है, राइट, बट सबसीक्वेंस बोला तो यू कांट डू दैट, ठीक है। तो वैसे यार मतलब सच थिंग्स ओनली यू नीड टू आइडेंटिफाई, दैट विल बी लाइक यू विल बी गेटिंग दैट बाय प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, मतलब इफ यू लाइक लेट्स ओपन यस्टरडेस क्लास वंस, कि क्या पढ़े थे हम। We were discussing on 12th, on 13th, right? Yeah. So just look at that. हमने क्या किया? Like this problem based on sliding window, complete sliding window question है ये, right? So are you guys with me? Hello? ठीक है। प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट नहीं है, लाइक पिछले बैच को कितना प्लेसमेंट हो, यू कैन सी प्लेसमेंट विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, व्हेन योर मॉड्यूल 4 विल बी गोइंग ऑन, देन द कंपनी स्टार्ट टू कम, ठीक है। सो दैट विल बी गोइंग लाइक इट विल गो टिल द एंड, ठीक है। चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। इवन इफ लाइक इवन इफ यू आर इन मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, ठीक है, लाइक यू विल बी वर्किंग ऑन योर रेज्यूमे, यू विल बी learning new things and parallelly sitting in the companies, ठीक है। हर जगह यही होने वाला है, right? So that is going to happen, ठीक है। अगर कुछ stats वाट्स चाहिए, you can contact the manager because I didn't keep track, I just kept track of my students जिसको मैं पढ़ाया था, जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि सर प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। Only kept track of them. I didn't connect my charger, I'm coming, just a second. I'm sorry guys, again I left गलती से, ठीक है। So yeah, I was saying कि what I was saying is कि
कि like a prefix sum, or if you talk about prefix sum, and if you talk about that particular thing, the sliding window, you can find ample number of questions, because it is very easy to create such type of questions, right? So just remember that. Okay, I don't know why my name is in this way, so weird. N type name, great. Sure. Okay, let me just share my screen. Okay, is my screen visible, guys? Hello? Yeah. Sorry. Okay. So, okay, cool. We can do that. Okay. So, if you want me to, if you insist, then we can start bit manipulation first. Okay. But before that, I just want to check with you guys. Okay. We'll just revise whatever we learned yesterday, and we'll just keep track of the things. कि क्या क्या किया तुम लोगों ने? Did you guys solve this question? This is the only question we'll be solving, because this is an important question. I'm going to start in a few minutes. Only this question, after this question. Okay, how many of you didn't do it? Just raise your hand. Like, you tried but you couldn't do it. Those type of people, just raise your hands. I want to see the count, and basically we'll be solving this. Don't worry. Okay. Matlab, see, whatever questions you're doing, okay, they are very closely related to the portal questions. Okay, that is the reason I'm picking them up. Okay. So, like, I'm not expecting you guys to do all the questions before we move forward. Okay, you can do the questions even after that. Okay, but like, do let me know if you're facing any problem. Okay, we can discuss that specific question so that your concept will be clear. Mostly with the information you know, okay, with everything you know, you can do it. You can do almost all the questions. Okay, if you feel that there's something that is lacking, okay, then probably that was not taught to you. Okay, and I'll teach you soon. Okay, so yeah, so do you want Joshna, I agree with you. Sabere बहुत wide है, right? Array is the basic data structure, right? तो बहुत wide होने वाला है questions, ठीक है? So but that's how it is going to be. ठीक है? You just need to bifurcate कि the question को देख के you need to bifurcate it कि this belongs to sliding window. Yeah, can this be done in hashing? Can this be done using two pointers? ठीक है? You need to bifurcate this thing. ठीक है? So these are just the techniques that you have. ठीक है? There's no specific way to do कि इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है. There's no way as such. ठीक है? So वैसे ही होने वाला guys. ठीक है? So don't be afraid. ठीक है? Do it slowly. ठीक है? You'll be reaching that place. ठीक है? Cool. So let's see. Let's see this longest subarray with some not this, sorry, minimum size. And yesterday someone asked me this thing about the negative elements. Did you guys find this? Can you strongly oppose me that this whatever approach I thought will not work for negative numbers? Can anyone volunteer to unmute yourself? Anyone who have studied the sliding window right now, just raise your hand. Okay, and I'll unmute you. And are you guys going to volunteer me for this? Anyone? Varun, will you? Varun, will you unmute yourself? Okay. Anyone, man. Anyone, not only Varun. Anyone wants to do that? Okay, we can have a discussion regarding this question. Okay. एक और बार सब approaches समझ में आ जाएगा. एक और बार we can conclude this question for every time. Okay. So let me unmute Rohan. Let me unmute Bharat. Anyone? Uday, I have done the other question which we are showing right now.
No worries. That was We'll, for minimum. yeah, we'll discuss that. Like, do you wanna like talk about this question with me? I think this is the same question, but just opposite, I guess, of minimum. Like, do you want to talk about this? No, I will talk the second one because I haven't Okay. tried this. Okay. No worries. Anyone? Shubham, Saurabh? Hello. Hello. Yeah. Hi. Hi. Hi there. Shubham. Hi. So there go. So this question, I'm getting my voice repeated now. Can you fix that? Oh. So basically, Shivam, what I'm expecting is to understand this question is asked to you in an interview. Okay? Just show me what are the approaches you'll be following. What are the things that you'll be telling to the interviewer? Okay? What is it like? I'll refine the way you're telling. Okay? I'll be saying कि ऐसे मत बोलो ऐसे बोलो. Okay? After you complete the solution. But I just want to see कि are you guys clear enough to express your solution to an interviewer or not? Okay? So let's do this exercise for now. Okay? And then we'll do this question and then we'll start with the bit manipulation. Okay? Just wait for it. Okay. Yeah, Shivam, I won't judge you. Okay, I won't scold you. There's nothing as such an examination of you. Okay, it's just a friendly interaction. Just understand it as if you're in an interview and this question is asked to you. Okay, let's get started. Okay, hi Shivam. Yes. Can Hi. you see the screen? Can you see the question that is displayed on the screen? Yes, it is visible. Can you read the question and like just read the question and do let me know if you have any queries. Okay. Basically ये क्वेश्चन है जो longest सब array with sum के इस Mhm. क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक array दिया हुआ है n साइज का और एक k दिया हुआ है जिसकी इंटीजर वैल्यू है और हमें इसकी लेंथ बतानी है ऐसे सब array की जिसका सम जो है वो हमारे k के बराबर हो। अगर मैं एक Correct. पहला Sum of सैंपल sub-array, correct? हाँ, राइट ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं पहला सैंपल टेस्ट केस लूं एक मेरा एरे गिवन है 10 5 2 7 1 9 जिसका एरे साइज है 6 हमें इसका एक ए साइज का सम जिसका 15 हो मिनिमम बताना है जैसे मान लो अगर मैं एक लूप चलाऊं मिनिमम 0 से लेकर हाँ मिनिमम मेरे को सब एरे बताना है मिनिमम बताना है या लॉन्गेस्ट बताना है देना एक बार क्वेश्चन इज अ डिफरेंट लॉन्गेस्ट बताना है सॉरी हाँ हाँ। इसमें लॉन्गेस्ट बताना है कि मेरा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या होगा जो मेरा सम के इक्वल होगा मान लो अगर Cool. मैं एक नॉर्मल लूप चलाऊं 10 और 5 0 और 1 पोजीशन पे तो मेरा 15 आ रहा है आंसर Correct. मेरा आंसर तो करेक्ट है बट मेरा इसमें लॉन्गेस्ट सब एरे जो बना वो 2 बना करेक्ट तो मैं फिर आगे चेक करूंगा 10 5 2 मेरा नहीं बनेगा नेचुरल है अगर मेरा 10 और 5 ऑलरेडी मेरा 15 बन चुका अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये मेरा सब एरे जो है 15 से बड़ा ही होगा तो मैं ये no लूप 10 it's not given that it doesn't contain negative numbers they can be negative numbers ओके तो इसमें क्या करूंगा मैं सारे नंबर्स चलाता चलूंगा जैसे 10 और 5 का निकाला मैंने मैं इसमें एक कर सकता हूँ मैं इसमें एक प्रीफिक्स एरे बना सकता हूँ जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ सम को इनिशियली 0 डिक्लेयर करके उसकी पोजीशन -1 कर सकता हूँ हैश मैप में तो उसमें मैं फिर चेक करूंगा अगर मेरा वो एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से तो इसका मतलब वो उसका सम जो प्रेजेंट है तो उनकी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ वहां से कि उसकी लेंथ मेरी पिछली वाली से मैक्सिमम है या सेम है या कम है okay तो so वहां let से me मेरे को उसकी लेंथ हाँ okay cool so you're correct ठीक है so what you're saying is let me repeat what you said ठीक है so you're saying कि in this question you're supposed to find a subarray with the sum k that is given to you right just mute yourself once I'm getting reverb एक बार I'll unmute you again ठीक है जैसे मैं खत्म करूंगा unmute कर लेना खुद को ठीक है I given you the permission ठीक है now so what you meant to say the first approach you'll be going is I'll be generating so Shivam I'm the interviewee okay I'm telling you the answer sir first what I'll be doing is I'll be just like I'll be taking two nested loops where I'll be generating all the subarrays right so I'll be taking a loop in such a way that okay, one of the loop will run from 0 to n okay I won't be saying ki I equals to 0 I is less than 0 I won't be talking about implementation just see how I'm speaking okay I'll be taking a loop that will be running from 0 till n and the nested loop will be running from that position okay, till the end and at every time a subarray is being generated for example here I is there here j is there right j will be increasing j will be increasing j will be increasing in this way I'll be generating all the subarrays that are available to me
right? And I'll be just checking ki if any of them matches the k as my sum. Okay? Again, mute yourself, please. So again, k as myself, right? So if that is the case, okay, then I will check what is, so how I'll be checking j minus I plus 1 will be the length of the subarray, correct? So if this length is greater than my maximum length, okay, well, I'll be maintaining another variable which will be initially 0. If this particular guy is greater than this, I'll be updating this. So in this way, I'll be generating all the subarrays, okay, and I'll be generating the sum of all the subarrays, right? And I'll be just checking whichever is matching, and I'll be storing the maximum value, and I'll be returning the maximum value. So the time complexity that is involved here is big of n square, because for every loop, I'm running another loop. Okay, for every iteration of a loop, I'm running another loop. So it will generally take big of n square. And the space complexity is going to be big of 1 because I'm not using any extra space. ये हुआ, देखो मैं like how I fabricated the statements. ठीक है, I didn't say कि I equals to 0, I equals to n. ये चीज मत करना. Like मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई ये चीज बोलता है, तो ये तो बहुत trivial चीज है, right? So don't say this thing, but instead say कि I'll be running a loop from 0 to n. ठीक है, ऐसे होना चाहिए तुम्हारा statement. I'll be just checking what is the length of the current subarray, and I'll be storing a variable to check what if it is the maximum, or else I'll store it in it. See, this is how I frame. I won't be saying math.max karuna. Don't say this thing. This is implementation. When you're telling the solution, you should be saying the way I told. Okay? And at the end, this is the final like nail in the coffin. You will be saying this thing. कि time complexity इतना है, क्यों है? For every iteration, I'll be running an internal loop again, right? And since I'm not using any space that is additional, I am getting the space complexity as big of n, big of 1. It's a constant space. Guys, do you agree with this thing? Again, just see how I fabricated the statement. So this is the first approach. Okay? First approach here. And Shivam, you did a pretty good job. Okay? I really like the approach you told. Okay? So I like, do you want to continue, Shivam? So I'll be saying, okay, this approach works. Okay? So this approach is going to work, but I want a more optimized manner. Can you optimize it more, Shivam? ओके इसमें बेसिकली हम ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हम ऑफ एन में कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सब एरे जनरेट करके देख सकते हैं हैश मैप के थ्रू. हैश मैप में मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं एक सम को 0 डिक्लेयर करके मैं उसकी पोजीशन डाल सकता हूँ -1. Okay. तो फिर मैं एक लूप चला सकता हूँ उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक. उसमें मैं चेक कर सकता हूँ, मैं पहले उसमें एलिमेंट चेक कर लूंगा कि वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उस करंट एलिमेंट को उसमें डाल दे हैश मैप में, और ये चेक कर ले कि उसका जो सम है सब एरे का वो हमारा के इक्वल है या नहीं है. अगर वो हमारा के इक्वल आ जाता है तो हमारी वो पोजीशन सेव कर लेगा पहले वाली इनिशियल वाली पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट करके, तो वो हमारी पोजीशन आ जाएगी. फिर से दोबारा आइटरेशन लूप में जाएगी, वो फिर से चेक करेगा क्या ये मेरा एलिमेंट जो है मेरा ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो नहीं है तो उसका सम चेक करेगा. Okay. सम चेक करने के बाद उसकी फिर पोजीशन देखेगा. Okay. Okay, bro. So you have the okay, just mute yourself. That's correct. Okay, Shivam. Like I really like, you know the solution. Okay, everything is in your mind, but the way you're presenting need to be refined a little. Okay, how it need to be refined. Okay, so how you'll be refining is you'll be building the solution from this solution to this solution. एक transition दिखना चाहिए. तुम क्यों ये कर रहे हो? Like why are you using a hash map instead of just 2 loops? ठीक है, what is the additional advantage you're having? ठीक है, such things need to be like told. ठीक है, for example, how I'll be saying. ठीक है, so ठीक है, since I'm using 2 nested loops, the time complexity is big of n square, right? So, but in order to decrease the time complexity, I need to eliminate one of the loop, right? So what I'm thinking is to use a hash map to accomplish this task. So what I'll be doing is basically I'll be running a loop from 0 to n, and I'll be generating all the prefix sums of the subarray. For example, it will be 10 in the first case, it will be 10 plus 5, 15, it will be 10 plus 5 plus 2,
In that way, I'll be generating all the prefix sums. Okay. So guys, are you able to see how clearly I'm speaking? Okay. This clarity is what attracts me. Like this clarity is exactly what attracts any interviewer. Okay. So how I'm saying, I'll be using a hash map and I'll be running a loop that will be running from 0 to n, and I'll be generating the prefix sums, okay, of the array, right? And I'll be storing the prefix sum against its index in the hash map. Okay. So whenever, okay, जैसे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है? But whenever is there echo from my voice still, guys? Clear है ना? No, right? It's clear. Yeah. ठीक है, let me continue. See, are you guys getting the clarity? I'll be generating this prefix sum of the array and I'll be storing it against its index in a hash map. And every time I generate a new subprefix sum, I'll be checking if the current sum minus k is already present in the hash map. Okay. If at all, so the reason why I'm checking this thing is, if at all this particular sum minus the current sum minus k is present in a subarray, it means that from that particular prefix sum till now, okay, the sum is nothing but k, right? So I can easily get the index of that element from the hash map, and I do have the current index, so I can easily get what is the length of the subarray, and I'll be storing the maximum subarray in a variable. In this way, I'll be getting the maximum length of the subarray, which is having the sums k in linear time. Since I'm using an extra space, that is the hash map, I'll be the space complexity is going to be big of n. Q. ब्रो शिवम, एक बार बताओ, तुमने जो बोला मैंने जो बोला सेम है कि नहीं? Obviously, you added one more statement that you will be maintaining one more thing, that is 0, because you will be checking if the whole prefix sum is correct. Okay. While implementation, right? While implementation, you'll be saying this thing. Okay. You can say this. Okay. But see, like the way you presented one answer and the way that only matters. Okay. You don't have to rush. Okay. शिवम, ठीक है, यू नो द आंसर. तुम जल्दीबाजी में बताओगे नहीं पूरा आंसर, तुम आराम से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करोगे आंसर को, जैसे मैंने किया, राइट? स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो. बोलो कि मैं एक लूप चलाऊंगा, प्रीफिक्स सम जनरेट करूंगा, प्रीफिक्स सम को मैप करूंगा अपने इंडेक्स के साथ, और हमेशा चेक करूंगा सम माइनस के है कि नहीं. अगर है, उसका डिफरेंस लूंगा. सी, दिस इज हाउ, स्टेप बाय स्टेप. तुम्हें पता है आंसर, तुम रश मत करो. तुम्हें पता है आंसर, रश मत करो. अगर रश दिख गया ना उसको, फिर उसे ऐसे लगेगा कि यू ऑलरेडी नोस दिस आंसर, सो ही इज इन द रश टू टेल दिस. ठीक है, उनको काम और कंपोज्ड आंसर चाहिए, राइट? वरुण, यू कैन टेक टाइम. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसने क्वेश्चन पूछ दिया एंड यू आर सपोज्ड टू टेल इट इन अ वेरी फास्ट मैनर. ठीक है, तो जरूरी नहीं है तुम बहुत जल्दी लो. लाइक लेट मी टेल यू अबाउट माय अमेज़न एक्सपीरियंस. अभी नहीं बताऊंगा, किसी दिन ट्रीज जब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे बताऊंगा. ठीक है, जब कंप्लीट करने वाले होते हैं. लाइक आई टुक सम टाइम. ठीक है, आई टुक सम टाइम. ठीक, यू कैन टेक टाइम. जरूरी नहीं है कि तुरंत ही पूछ जाओ, 5-10 मिनट ले सकते हो सोचने के लिए. पूरा सोचो, स्टेप बाय स्टेप मारो, राइट? Sir, can we do it in constant space and linear time complexity? Yes, I think we can do it, but there is some constraint. Okay, the constraint is कि again, anyone wanna try it? Anyone wanna try the solution? कि कैसे बोलना होता है in front of interviewer? Guys, Joshua, you wanna try? Correct. It's been okay. Why are we doing I plus 1? Correct, because I is the index, right? So you're supposed to find the length of it. Yes, correct, Bharat. You can take 5 minutes to 10 minutes time. Okay, Joshna, you wanna try? I think you are pretty confident about the third approach. Okay. So when we approach new question and we don't know exact code,
we will be adding and deleting code multiple times, then how will we explain? ठीक है, वही है ना यार, it like the interviewer won't ask you to code, ठीक है, unless you tell him the exact solution, ठीक है. जैसे मैंने ये चीज नहीं बताया होता ना, he won't ask me to code it, ठीक है. So ऐसे like they are not expecting कि you are coding and then you are building the solution. That is not the right way. You build the solution and then code it. कोड करते करते बिल्ड मत करो, ऐसे ऐसे सर्कल में मत चलना. मतलब कोड को बिल्ड करना इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्डिंग अ कोड इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. No, it is not fine. You can't code it unless you explain the solution. Is that cool, Ajay? You can't code it. Like interviewer won't even allow you code unless you tell him the exact solution what you're going to code. Okay. If he feels that it's fine, again, you're able to do it, then he'll ask you to code just to check how well you're building the code. Okay. It's not building the solution. You build the solution. इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी भी मैं like I'm not spoon feeding you guys everything. ठीक है. I'm letting you guys do the questions. I'm letting you guys think about the questions. ठीक है. जिससे तुम solution build करो अपने दिमाग में. ठीक है. और उसको कोड की तरह कन्वर्ट करना, like that's I'm teaching. Once you're able to do this successfully, because these are the 2 steps that is going to involve. Okay, up that it's different. Now it's module 3, right? So I want you guys to adopt this solution. You first build the solution and then code it. Varun, kind of you might be feeling insecure about you might be feeling little bored, but it's fine. Okay, you can take your time if it's necessary. Okay, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सॉल्यूशन पता है बट आई वांटेडली विल टेक सम टाइम, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम लेता हूँ, जिससे ऐसा ना लगे कि मैं मेमोराइज कर लिया. ठीक है, इवन दिस थिंग यू नीड टू स्मार्ट हियर. ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में देखते भूल गया आंसर में, फिर से लगेगा यार ये इस बंदे को आता है ये क्वेश्चन. करेक्ट. हाउ मेनी क्वेश्चन दे कैन आस्क? 2 to 3 क्वेश्चंस दे कैन आस्क. 2, ठीक है, मिनिमम, राइट. कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, बस दे देंगे, राइट, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो. बट मेरे हिसाब से 2 पूछते हैं हर इंटरव्यू में. मेरे साथ 2 ही पूछा था जितने भी इंटरव्यू दिया. अमेज़न में 3 क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि मैं जल्दी खत्म कर दिया 2 क्वेश्चन. ठीक है, I'll tell you. As you told yesterday, we know the approach, but we need to figure out the code. Then we can delete. Yeah, you can do that. Okay, you can do that. As an implement करते करते you can speak. ठीक है, थोड़े interviewers prefer not to speak. ठीक है, but guys, third approach कौन try करना चाहते हैं? Like interviewer wants to explore even further. How can you do that? So I can say, sir, someone raised my hand. Okay, I think let me tell it if it's taking time. Okay? I can say, sir, I can do this question without using an extra space, but the constraint is that this method will only work for the positive elements. ठीक है, so देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा ना, the first question देखो, it's not that क्वेश्चन दे दिया और तुम तुरंत करने लग गए, right? That is a different thing. ठीक है, तुमको ये करना होगा कि like you will be asking questions to the question. You will be asking, so what is the range of the elements? Sir, can there be a negative elements in the array? Right? Such questions are really necessary. Are there duplicate elements? क्योंकि तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. तुम लोग को ये सब चीजें पूछना चाहिए. ठीक है, अगर नहीं पूछोगे ना तुम्हें लगेगा कि इसको पहले से पता है ये क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछो. अगर मैं पूछ लिया, वो बंदा बोला कि पॉजिटिव एलिमेंट सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, then वो थर्ड अप्रोच भी एक्सपेक्ट कर रहा है, where I'm using 2 pointers. ठीक है, and moving. So how will this method work? ठीक है, so I'll be using 2 pointers. ठीक है, both of them namely start and end. Both of them initially will be pointing to the 0th index. ठीक है, and so you can ask for the help. He will guide you. He will give you a hint. ठीक है, एक बार मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा तो तुम्हें लोग को समझ में आएगा इंटरव्यू कैसे होने वाला है. ठीक है, तुम्हें बताऊंगा अभी नहीं, रुको थोड़े दिन रुको. ठीक है, ट्रीस होने दो फिर मैं बताऊंगा. ठीक है, तो लाइक वो हिंट दे देगा, थोड़े देर में हिंट दे देगा. ऐसे सोच के देखो, ऐसे सोच के देखो, हिल भी सेम काटते. ठीक है, अगर तुम ध्यान से पकड़ोगे उसका लाइंस तो तुम कर लोगे. ठीक है, डोंट गेट स्टक. Okay, cool. So see, basically start and end. I'll be making 2 pointers, namely start and end, which are pointing to the first element.
ठीक है, and I'll be, so I'm under the assumption that there are all positive values, so I'll be increasing the size of subarray means that increasing the sum. This is the first assumption. Well, assumption is this is the first observation, right? So what I'll be doing is by incrementing the end pointer, I'll be increasing the size of the subarray so that the sum of the subarray will be increased. Okay. So I'll be increasing the sum till sum is less than k. The moment it exceeds the k value, if sum is less than k, okay, while sum is less than k, whatever, okay, I'll be increasing the end pointer, okay, so that I'll be increasing the sum. The moment it is equal to sum, okay, I'll try to note if it is the maximum value or not. Okay, if it is not the maximum value, okay, if it exceeded the sum value, then I'll try to decrease the size of the subarray, because decreasing the size of subarray is nothing but decreasing the sum, right? You decrease the size of subarray, you decrease the sum, right? You decrease the size and you're decreasing the sum. You're increasing the size, you're increasing the sum, right? They both are directly proportional, right? So I'll be decreasing the sum, okay, so that I'll be bringing the sum again back to less than k. And in the process, if at all it will become equal to the k, then I can note it down. Then I can note its length. And if at all it is the maximum one, I'll be noting it into final answer. How cool is that? Lol, right? Chalo, okay. So is this thing clear? Okay. So I hope you guys did this question. Okay. This will only work for positive elements because we are moving with this assumption, right? Size badao, sum badega. है ना? With this assumption we are moving, right? For that reason we will be doing it. ठीक है? ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू डू इट. ठीक है, अगर नहीं कर पाओ, ठीक है, अगर बिट मैनिपुलेशन थोड़ा डरावना लगा तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे. फॉर नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट बिट मैनिपुलेशन. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. नो, राइट? शैल वी स्टार्ट गाइस? ठीक है, कूल, विल स्टार्ट इट. ठीक है यार, लेकिन लाइक आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम हियर. आई डोंट हैव water. I ordered the bottle, but something is came open. Let me just see. Okay, cool. Let me get started. Okay, let's start. Okay, guys, the thing you're going to learn today. Okay, online nahi, I just told the guard to get it. Okay, chalo, let me continue. Okay, so we are going to start the thing called bit manipulation. Okay. Do let me know ये नया टॉपिक है, कुछ भी समझ नहीं आया बताना. लेकिन लेट मी कंप्लीट पर्टिकुलर टॉपिक ना, कंप्लीट करूंगा देन आई लास्ट कि यहाँ से कुछ डाउट है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि योर डाउट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मी. ठीक है, सो वेट फॉर इट, डोंट स्पैम. ठीक है, डोंट स्पैम. ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है एक बार बता दो जेन्युइनली कि क्या चीज समझ नहीं आया, विल डिस्कस इट. ठीक है सर, न्यू टॉपिक. ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब अगेन क्यों सीख रहे हैं हम ये, हम हर चीज तो कर पा रहे हैं, राइट?
सो हम क्यों सीख रहे हैं, बताओ इसको। आगे आई डोंट नो, मत बोलो। करेक्ट, करेक्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, बस बस। ठीक है, हर चीज देखो, तुम स्टार्टिंग में नॉर्मली तुम एरेस के साथ काम करने लगे, राइट। एरेस को ऑप्टिमाइज करके तुम बाइनरी सर्च निकाल लिया, तुम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स निकाल लिए, क्योंकि सॉर्ट करते ही यू विल बी फाइंडिंग मोर थिंग्स वेरी इजीली, राइट। बाइनरी सर्च, यू लर्न बाइनरी सर्च, यू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स, क्यूज, राइट, लिंक लिस्ट। ठीक है, क्यूज सीखोगे, अब मत बोलना कि नहीं सीखा, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। वैसे इतना भारी टॉपिक नहीं है क्यूज, बट इट्स कूल। ठीक है, so yeah, so such questions you can do, right? उसके बाद let me tell you और क्या हुआ है, right? These are the things, man. You learned a linked list, you learned all these things. Then you learned here in the module 2, you learned things called hashing. ठीक है, बहुत powerful है hashing, मतलब constant time में कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें, right? एक बार build करना पड़ेगा, right? You learned 2 pointers, you learned क्या क्या सीखा, sliding window, right? All these things are leading you to write algorithms in a better and better manner. So what is this bit manipulation? ठीक है, hash map, correct. What is this bit manipulation? ठीक है, so let me make mark today date क्या है उसका, 14 October, right? So what is this bit manipulation? What exactly is this? ठीक है, okay, good question. What is this? है ना, तो you can understand it as you're going in a deep level of particular numbers. ठीक है, so let me explain you the number system first, then only you'll be understanding. ठीक है, bit manipulation, पहले bit समझेंगे, bit क्या होता है, उसके बाद manipulation पे आते हैं, right? Let's break it down just like we did it for the DS and everything, right? So let me explain the number system first. ठीक है, I know most of the people know it, जिसको पहले से पता है don't respond, to the people who are learning it for the first time. ठीक है, do let me know. ठीक है, 5 10 कुछ number like 88 110 200 5, right? All these are decimal numbers. Do you guys agree? ठीक है, yeah, this is a fresh topic. These are called decimal numbers. Decimal numbers मतलब the digits are from the range 0 to 9. Is that correct? We use this. We use decimal number system. ठीक है, guys, तुम लोग को कभी टाइम मिलता है, बहुत ही ज्यादा बोर हो गया, कभी देखना, ट्राई टू वॉच दिस मूवी. दिस इज एलन ट्यूरिंग्स मूवी. ठीक है, द मूवीज नेम इज इमिटेशन गेम. ठीक है, सो लाइक द फर्स्ट कंप्यूटर जब बना था उसके बारे में मूवी, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर का सेटअप है, एक बार देख लेना. ठीक है, अगर टाइम मिला तो. ठीक है, ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, वेयर डेसिमल नंबर सिस्टम वेयर यू विल बी डिजिट्स ऑफ 10 to 9. ठीक है, बट like this is how you understand the math, this is how you're doing the math. तुम पूरा कैलकुलेशंस, जो पैसे का कैलकुलेशन, तुम्हारा सैलरीज में क्रेडिट हो रहा है, एवरीथिंग इज इन दिस नंबर्स. ठीक है, इन द डेसिमल नंबर, तुम्हारा फ्लाइट का कोड और ट्रेन का पीएनआर नंबर, एवरीथिंग इज इन दिस नंबर, राइट? We as a human use decimal numbers, but computer is not like that. ठीक है, कंप्यूटर को बस only 2 things it can understand. ठीक है, it has capacitors, ठीक है, it has transistors. उनका बस ये है कि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन. ठीक है, चार्ज्ड या अनचार्ज्ड. There are only 2 states that are present in the computer. You can call it as 0 and 1. ठीक है, and understand क्यों, क्योंकि कोई भी, मतलब तुम देख लो, मैग्नेट का भी लाइक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, राइट? सो ओनली इन दैट वे इट कैन अंडरस्टैंड कि इट कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज बाइनरी. जैसे डेसिमल है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, राइट? सो व्हाट यू हैव हियर, डेसिमल में यू हैव द बेस एज 10. सो आई विल टेल यू इन अ मिनट व्हाट इज द बेस. यहाँ पे बेस इज कॉल्ड 2. इमिटेशन गेम, द इमिटेशन गेम. अभी नहीं, मतलब जब तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम मिल गया, ठीक है, देख लेना. ठीक है, जिस दिन मैं हॉलीडे दे दूंगा उस दिन अगर पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो गया तो देख लेना. ठीक है, वैसे भी इतना भी लाइक यू वोंट बी रिलेटिंग मच टू द टॉपिक, बट इट्स अ गुड मूवी.
ठीक है, तो चलो लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, कूल कूल कूल, यहाँ आ जाओ, फोकस हियर, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे, बहुत बहुत ही ज्यादा अटेंशन चाहिए मुझे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, अरे एक बार मिस हो गई फिर आगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेट मी कंटिन्यू। यस, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है, यहाँ पे बेस 2 है, राइट। सो व्हाट डज दिस बेस मीन? बेस का मतलब ऐसे समझ लो कि डू यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि 205 if I talk about this, लोग बोलते थे इसका पावर 10 होता है, मतलब 1's पावर होता है, इसका पावर 10's पावर होता है, इसका 100's पावर होता है। डू यू गाइस नो दिस थिंग, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बेस इज, कि like what is the power, मतलब at what power next digit को if you put the next digit with what value it will increase, that is power, मतलब this will be increasing with 10 power 1, this will be increasing with 10 power 2, so this is how the power is defined। ठीक है, and हर base के लिए if you have a base 10, the elements can only be from 0 to 9। एक बार सोचो क्यों, अगर 10 हुआ it is nothing but next digit का 1 है ना, because see you can have 0, you can have 1, you can have 2, as I said, you can have 9। If you wrote something called 10, it is nothing but 10 power 0 and this is 10 power 1, correct? So again it got resetted to 1, right? So always think कि base 10 है, ठीक है, उसका नंबर 0 to 9 ही हो सकता है, right? वैसे ही base 2 है, the numbers can only be of the range 0 and 1, correct? ठीक है, let me tell you about this। What does this number can be written as? 2 into 100 plus 0 into 10 plus 5 into 10 power 0, that is 1, correct? This is nothing but 205। I know that it might be looking little childish कि क्या है ये क्या कर दिया, but like I'm trying to explain what is the meaning of base। It means that हर एक digit को if you move ahead, ठीक है, then the power of that, like the value of that digit will increase, that is what base is। ठीक है, the similar way अगर base 10 है, you will be having all the elements from 0 to 9, all the elements that are less। यहाँ पे base 2 है, right? So there are only 2 digits, that is 0 and 1। Cool, correct? Now let me tell you how are the numbers represented as। ठीक है, numbers are represented as this, like you can find like the moment you write like कुछ लिख दिया जैसे कि int a is equals to 88, कंप्यूटर को ये 88 करके स्टोर नहीं होगा, क्योंकि it doesn't have any mechanism to store कि what is the state। it has only two mechanisms, one is charged or uncharged, 0 या 1, इसी फॉर्मेट में सेव करेगा। so this number, every binary number, ठीक है, storage doesn't happen in this way, it happens in a binary format। it will be stored something like this, 0 1 1 0 1 1। I'm not sure if it is correct or not, जितना याद है मुझे लिख दिया, right? So but this is how it is written, ठीक है, this is how it will be stored। okay, so how is this thing, ठीक है, so every digit is called a bit, जैसे यहाँ पे digit बोलते हैं is called a bit, ठीक है। so 1 है, it is called bit, set bit मतलब bit is set मतलब it is 1, ठीक है, 0 है तो bit is unset। cool guys, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, लेट मूव फॉरवर्ड। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, है ना? सो हाउ डज दिस वर्क? ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू अल्टीमेट ट्रांसलेशन happens to binary, ठीक है, बिकॉज हर नंबर, हर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी तुम दोगे, मतलब इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, ठीक है। व्हाटएवर यू आर राइटिंग इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखना इसको। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो भी तुम लिख रहे हो, है ना, लाइक सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, एवरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू राइटिंग जो इंग्लिश की तरह है थोड़ा बहुत, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद बहुत सारे लेवल्स है, आई वोंट गो इनटू द डेप्थ, ठीक है, आई कैन गो बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, ठीक है, बट एट द एंड यू विल बी हैविंग, एट द एंड इज कॉल्ड मशीन कोड।
like this code, मतलब high level language will be going into compiler, right? तो compile होगा, right? It will be generating some other format, ठीक है? Simply code is like it is a way of like मतलब de complicating the things, ठीक है? So at the end last stage होगा machine code का. Machine code मतलब everything is zeros and ones, मतलब zeros ones zeros 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 ones zeros ऐसे ऐसे ones 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 zeros 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 ऐसे ही, like it will be there in this way. You can't read this, ठीक है? मतलब समझ में नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन machine can understand only this thing, ठीक है? So that's what I'm writing. Ultimate translation happens to binary, ठीक है? सोचो whatever you're doing, ठीक है? सब algorithms तुमने you learned it in the high level language only. Whatever optimization you're able to do, you're able to do it in the high level language only, correct? So सोचो if you broke the things into a very detailed level, मतलब और नीचे level तक गया, and if you're able to do the things in a binary way, socho what is the time like how good you can reduce the things, how good you can reduce the complexity of the things, कितना फायदा हो जाएगा सोचो एक बार, correct? And that is the reason why you need to understand, you need to learn this, learn bit manipulation, ठीक है? So देखो assembly code, like if you guys are from CS background, there's a I think a subject that where you'll be working with the these things processors, you know, 8085 and 8086 processors, right? उसमें you're supposed to do the code in this way, right? So तुम्हें ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, add, if you guys remember, add m5, so m will be added into 5, ठीक है? The instructions are going to be in this way, ठीक है? पूरा कोड लिखना पड़ता था वहाँ पे, like find this ऐसे लिखो, right? So यहाँ पे like this is very sophisticated, high level language is very sophisticated. You can write if ये हुआ तो ये करो, else, like it is very sophisticated, right? But these things are not sophisticated, but these things will be going down, like they will be broken by the compiler, and at the end you will be having the machine code as the ultimate translation, correct? ठीक है, no worries, वो सबकी जरूरत नहीं है, मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? Like this is just an example कि how coding का how high level of abstraction we use. हमको पता भी नहीं कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, क्या क्या और अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमको, राइट? हम बस करते हैं और बिल्ड कर देते हैं और वो चल जाता है, राइट? बट इंटरनली बहुत सारी चीजें का एब्स्ट्रैक्शन हुआ है, लाइक दैट व्हेन हाई लेवल लैंग्वेज गॉट फॉर्म, ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी, आई होप यू गाइस रियलाइज्ड कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, ठीक है? लेट मी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो एनी नंबर दैट इज रिटर्न, ठीक है? तुम्हें डाउट आएगा, सर अगर कोई नंबर ऐसा है तो इसको मैं 11,001 करके क्यों नहीं पढ़ूं, बट व्हाई शुड आई कॉल इट एज 1101, राइट? सो फॉर दैट यू विल बी लाइक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, देयर इज अ सबस्क्रिप्ट कॉल्ड 2, लाइक दिस. 2 का मतलब है कि दिस इज कॉल्ड विद द बेस 2, ठीक है गाइस, राइट? सो दिस इज द बेस 2. सो हाउ डू यू रीड दिस, कि क्या मतलब है इसका, ठीक है? जैसे मैंने बताया था, ठीक है, दिस पावर, दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज द पावर ऑफ 2 पावर 0, दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज द पावर ऑफ 2 पावर 1, दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज द पावर ऑफ 2 पावर 2, दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज द पावर ऑफ 2 पावर 3. जैसे उसमें होता है वैसे इसमें भी है. जैसे जैसे डेसिमल सिस्टम में the power increases by the 10 factor, यहाँ पे base 2 का factor से बनता है. So let me see what is this. 1 into 2 power 3 plus 1 into 2 power 2 plus 0 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0, right? So what is this? This is nothing but 8. This is nothing but 4. This is nothing but 0 है तो 0 ही होगा, nothing but 1. So क्या हो गया guys ये, correct? 13 with a base 10. तेरा, right? Cool. So this is how you convert a binary number into decimal number, right?
So see this thing, how you're like giving the power to each and every position and just deciding कि this position पे कितना power होनी चाहिए, and in this way you can generate any number, like कोई भी number इस format में I can write. Let's only talk about numbers for now, ठीक है, because you will be working only in numbers, ठीक है. तो देखो, like समझ लो value ऐसा कुछ है 1 0 0 1, right? So what is this? This is nothing but ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, right? 1 into 2 power 3 plus 0 into 2 power 2 plus 0 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0. And what is this? 8. 8 plus 1. This is 9. Correct? Guys, is this making sense, guys? करेक्ट. अब रुको, आगे चलता है अभी. तो 0 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई गेस कर सकता है? बाइनरी में how is 0 represented? 0. Correct, right? 1, how is 1 represented as 1? Right? Right? How is 2 represented as? किसी को डाउट है? It will be represented as this. एक बार देखना, 1 into 2 per 1 plus 0 into 2 per 0, that is nothing but 2. Agreed? Right? In the same way, 3 will be represented as this, 1 into 2 power 2 plus 1 into 2 power 0. It is 3. ठीक है. तो देखो गाइस, अभी सुनो एक बार, जैसे 0 लिखते हो, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, ऐसे 9 आते ही, लाइक अगर एक और वैल्यू ऐड करना पड़ता है, लाइक यू विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन. हाँ, यू विल मेक दिस थिंग गो बैक टू 0 अगेन. ठीक है, अगर +1 करना पड़ा, लाइक यू विल मेक दिस 0 एंड यू विल इंक्रीमेंट द नेक्स्ट पोजीशन, मतलब नेक्स्ट पोजीशन 0 था, वहां पे ऐड किया. सेम लॉजिक गोस हियर. ठीक है, लाइक नेक्स्ट पोजीशन को एक्टिवेट करूंगा एंड आई विल बी राइटिंग दिस. करेक्ट, इट विल बी 1, it will be 1 1 0, it will be 1 1 1, it will be 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0. Right? This is nothing but 4 5 6 7. You don't have to remember it. ठीक है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ गाइस? कंफर्म करो कोई. 9 10. Right? You can keep on writing it in this way. Okay, are you guys understanding how the arithmetics are happening? Okay, so let me just talk about this. Okay, this is not 10, this is 2. Okay, ये 2 है. ठीक है, क्योंकि you know you can see this from here, right? If I do +1 to it, ठीक है, 0 plus 1 is nothing but 1, right? And 1 plus यहाँ पे 0 here, right? It will be 1 1. You can see that this 3. Correct. If I do +1 to it, 1 plus 1 will not be 2. तो 2 का ऐसा नहीं लिखूंगा. I'll be writing 2 as this one. 0 यहाँ पे आएगा and carry will be made here. 1 plus 1 again 2. That is 1 2. Right? It will be 100. It will be looking like this. You can see 3 है. 3 plus 1 is this 4. Do you guys agree with me? It will be done binary. तुषार, कोई भी नंबर डालो, it will be done internally. ठीक है, अगर तुम्हें कोड लिखना है, that is another part. कोड तुम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो इंटरनली होता है, वही होगा, बाइनरी में ही होगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन. ठीक है, डोंट वरी यार. देखो, अगर मैं एक नंबर को, ठीक है, लेट मी अज्यूम देयर इज अ नंबर लाइक दिस 100. इफ आई वांट टू ऐड 1 टू इट, इट इज सिंपल, राइट, बिकॉज यहाँ पे कैरी नहीं हो रहा. बट इफ आई हैव अ नंबर लाइक दिस 101 एंड इफ आई नीड टू ऐड इट, ठीक है, 1 plus 1 will be 2. I can't write 2 here, right? I need to write it 0 here and then 1 I need to carry, just like we used to do बचपन में करते थे ना, the addition. 1 plus 0 is again 1, right? And then here 1 plus 0 is 1. So this is what it is. You can see this is 5. 5 plus 1 is nothing but 6. देखो, ठीक है, okay. These things won't be asked in the interview. These are for the knowledge. Okay? And guys, you don't have to remember all these things. I'll tell you something. Okay? I'll tell you something. Okay? You don't have to remember all these things. Okay? We'll see this. Okay?
So let me tell you, like tell me these things. Are you clear with what is a bit? Bit matlab this digit in a binary, right? It could be set or it could be unset. Set matlab 1 है, unset matlab 0 है. Agreed? Okay? That is what you understood. You understood how the number system works. You understood about bases. Number का base, number 10 base है, ये base 2 है. Did you guys understand that? ठीक है. Did you guys understand that at the end तुम कुछ भी लिखो, everything will be in binary. ठीक है. तो तुम्हें binary सीखना ये भी समझ में आ गया. Correct. And then I showed you how to convert a binary number into a decimal number. उसका प्लेस पे जो भी पावर है, just multiplied with that power. 1 को उस पावर से मल्टीप्लाई करो, 1 को उस पावर से मल्टीप्लाई करो, 0 से उस पावर से मल्टीप्लाई करो. करेक्ट. सो आर यू गाइस इन अ पोजीशन टू से मैं कोई भी नंबर दे दूंगा तुम्हें, तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है. तो चलो मैं एक नंबर देता हूँ, ये नंबर को कन्वर्ट करके दिखाओ, इसका नंबर क्या आने वाला है फास्ट. इसको कन्वर्ट करके बताओ, पेन पेपर होगा, कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल. ओह चैट काफी आ गया. लेट मी सी. 27 है. ओके, देख सकते हो तुम, एक बार देख लेना. 2 पावर 0 है, 2 पावर 1 है, 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 4 है. 2 पावर 4 कितना होता है? 16. 16 plus 8 plus 2 plus 1, right? What is this? ठीक है, it is nothing but 24. 24 plus 3, that is 27. Correct. बस you guys learned this. Ask me another question. एक क्वेश्चन पूछो, वो उसका आंसर दूंगा मैं कि नेक्स्ट में क्या, like what should come into your mind after learning all this thing. Correct. Correct, Arundhati. You learned how to convert a decimal to the binary. You should be knowing how to convert decimal to binary. ये भी तो सीखना है गाइस. ठीक है, तो तुम लोग को सीखना है. कंप्यूटर तो कर लेगा, राइट? कंप्यूटर तो कर लेगा, राइट? तुमको कैसे सीखोगे, राइट? तो हाउ डू वी डू इट? हाउ डज 4? यू नो दैट 4 है, राइट? 4 इज a decimal, राइट? सो हाउ डू यू डू इट? सो लेट मी टेल यू स्टैंडर्ड प्रोसीजर कैसे करते हैं. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि यू विल टेक 4, यू विल डिवाइड इट विथ 2. ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, लिसन टू मी. जिसको पहले से आता है मत बोलो, जिसको नहीं आता वही बोलो. ठीक है, डिवाइड कर लिया 2 से, तो 2 into 2, देखो लाइक दिस इज काइंड ऑफ 2 into 2 is 4, राइट? व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0. 0 को, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखो, राइट? अगेन इसको लाइक व्हाटएवर इज द क्वोशिएंट लेफ्ट, ठीक है, उसको बार बार डिवाइड करते रहना विद 2. ठीक है, लेट मी डिवाइड इट विद 2. ठीक है, इट विल बी 1 here, right? and the and the and the remainder is 0, right? See, if you divide it again, okay, you can see that it will be 0 at the end, but the remainder is 1. Okay, you can leave it here or you can divide it till it is 0. Okay, after this procedure you will be taking it in a reverse direction. जो भी reminders है ना, just see this 1 0 0. This is the binary representation of the decimal 4. Just see this, guys. 2 power 0, 2 power 1 and 2 power 2. Right? Like, did you guys understand the procedure कि कैसे काम कर रही है? ठीक है, एक और चीज करते हैं. ठीक है, let me do for 6. ठीक है, और yeah, I can do it for 6. Yeah. ठीक है, so let me do it for 6. I'll divide it with 2, so it will be 3. लेकिन रिमाइंडर आएगा 0. Correct? Let me divide this. ठीक है, like it will be 1. ठीक है, but रिमाइंडर आएगा 1. ठीक है, I can leave it here
और I can do one more step. It's the same thing. अगर मैं इस point पे भी ये छोड़ दिया, it will be 1 0 0, right? So I can take it in this way and see that 1 1 0. This is nothing but 6 in decimal. It's nothing but 1 0 0 in decimal. Can you see this, guys? How cool is that? कुछ और नंबर ले लो. 7 7, right? 7 को डिवाइड करना 2 से, it will be 3. ठीक है, रिमाइंडर 1. वापस डिवाइड करना, it will be 1. 2 into 1 is 3. I mean 2 into 1 is 2, but remainder is 1. ये देखना, लास्ट में 1 बन गया, तो just do this thing. It will be 1 1 1. चेक कर लो, चाहे तो क्रॉस चेक कर लो. You can see that 1 1 1 is nothing but 7, right? 1 0 0 is nothing but 4. 1 1 0 is nothing but 6. Can you see this, guys? Correct, guys. 14 के लिए Dinesh is asking me to do it for 14. चलो देखते हैं 14 के लिए. 14, 2 into 7 is 14, right? Remainder is 0, right? 2 into 3 is 6, remainder is 1, right? 2 into 1 is 2 and remainder is 1, right? So it will be 1 1 1 0. देखो इसको 1 1 1 0 को, but 2 power 0 है, 2 power 1 है, 2 power 2 है, 2 power 3, 2 power 2, 2 power 1, right? It is 8. 8 plus 4 plus 1. 8 plus 4 plus 2. I mean, sorry. 8 plus 4 plus 2. It is nothing but 14. Can you guys see this magic? Correct? Correct? सोचो ये, it is just the reminder कि इस point पे क्या multiply होना है, right? बस इतना ही है, right? Like whatever is that position, if that's multiplying on, this is the standard procedure of finding a number, decimal number to binary number. ठीक है, इसको तुम कर सकते हो क्या? Like, can you guys write a computer program to do this? सोच के देखो एक बार. Can you guys write a computer program to work this? कैसे लिखोगे भाई, बताओ. कोई अनम्यूट होना चाहता है क्या? मेरे हिसाब से देखो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ. देखो एक बार मतलब मैं लिखूंगा नहीं पूरा, ठीक है? लाइक बहुत ही स्टैंडर्ड है. यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर. मतलब ऑनलाइन मिल ही जाएगा तुम्हें, बहुत इजी है, ठीक है? चल 10 को, लेट मी जस्ट डू इट. 10 को इट विल बी 0. लेट मी डिवाइड इट अगेन, इट विल बी 1. लेट मी डिवाइड इट अगेन, इट विल बी 1 and it will be remainder 0, right? So you'll just go back in this way. It is 1 0 1 0. Correct, guys? Is this correct? Don't call it don't call it 1010. It is just this. ठीक है guys? ठीक है, what I was saying before this, I just forgot what I was saying. You guys learned how to convert a number, decimal number to a binary. You guys learned how to convert a binary number to decimal. हाँ, I was talking about this thing. सिंपल है, मतलब एक बार सोच लो कैसे करना है. एक बार while if at all you want to convert a decimal, ठीक है, उसको while n is greater than 0 कर देना. Like this could be asked, man. This code could be asked in the interview. ठीक है, this code is going to be asked in the interview. मतलब return type तो like it can be a string. String में तुम कर सकते हो, right? वरना you can pass it as a array, right? वरना तुम इसको नंबर की तरह, इंटीजर की तरह रिटर्न कर सकते हो, राइट? वो देखना चाहते हैं कि यू जस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट इट और नॉट. ठीक है, एक बार सोचो यार, मतलब आई डोंट नो हाउ टू राइट. एक बार बताना सही सही लिख रहा हूँ. लाइक I'll divide, I'll find what is the remainder. ठीक है, n modulo 2. ठीक है, मतलब देखना एक बार, 10 modulo 2 is 0, right? so उसको कहीं स्टोर कर लो और उसके बाद रिवर्स करना होता है तुम्हें. स्ट्रिंग ही ले लेना, कोई स्ट्रिंग ले लेना. फॉर नाउ आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, यू कैन टेक एन इंटीजर एज वेल. ठीक है, एक इंटीजर को बिल्ड कैसे करोगे, यू नो इट, राइट? हाउ टू बिल्ड इट.
right? So let me for now take a string which is an empty string, okay, and I can just do this thing, string of like whatever the reminder is, right? And उसके बाद n equals to n by 2. बस यही है ना code, guys? Tell me, is this the code या कुछ changes है? करेक्ट, इसमें रिवर्स मिलेगा बिकॉज यू आर एडिंग इट, लाइक 0 का ऐड किया पहले, उसके बाद 1 को ऐड किया, इसके बाद 0 का ऐड किया, उसके बाद 1 को ऐड किया, यू नीड टू रिवर्स इट एट द एंड, ठीक है? रिवर्स कर लेना स्ट्रिंग को. हाउ डू यू रिवर्स इट? यू नो हाउ टू रिवर्स इट, ठीक है? यू कैन टेक इट इन एरे एज वेल, एक एरे भी ले सकते हो, या यू कैन टेक इट इन इंटीजर एज वेल. यू जस्ट नीड टू like do this thing, s equals to s into 10 plus reminder. You need to do it if at all it's an integer. Correct, guys? Any doubts? The same thing, तुम उसको like you can convert a binary number into decimal number. एक बार आइटरेट करना स्ट्रिंग को, पीछे से आइटरेट करना, और जो भी वैल्यू आ रहा है उसका पावर बढ़ाते जाना और ऐड करते जाना. ठीक है? So like I'll send you the code. It's very simple, okay? But this is not the point of like a discussion. Actually, we are supposed to run the algorithm based on it. So we'll move from here. Okay? It's very trivial. Okay? I'll send you. I'll teach you if you are not figuring it out. But I generally don't teach this. Okay? Even in the last, this is the first class I'm teaching this. Okay? So cool. Let me move forward. Okay? So hello guys, I told you this thing. Now let me introduce some terminologies. Okay? You learned all these things. Okay? You learned about set, you learned about bit, you learned about not set bit, okay? Unset bit. Let me talk about data types. Okay, the data types. Did you guys hear these things? कि 1 bit मतलब 1 bit मतलब आप समझ गए 1 bit मतलब क्या है? 1 bit मतलब क्या है? What is a 1 bit? Yeah, it is the smallest undivisible memory where जिसका value 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना? This is the smallest memory possible. इसको और divide नहीं कर सकते, right? Memory, right? You know RAM, like whatever memory, like laptop in which I'm teaching, it's an 8 GB memory. Okay, 8 GB RAM बोलते हैं. It is just divided into bits. Okay, what does this 8 GB means? We'll talk about it later. Okay, but like, did you guys hear this thing? कि 1 byte is equals to 8 bits करके. Right? Did you guys hear this thing? कि 1 byte is equals to 8 bits. ठीक है, वैसे ही 1 kilobyte equals to मतलब 1 kilobyte नहीं exactly, मतलब like 1 kilobyte 1000 बोलते हैं, but it is different. ठीक है, it is this thing 1024 bits. Sorry, I'm sorry, 1024. What is it, guys? Tell me. 1024 bytes, right? Hello? Correct. So what are these things? Like एक बार सोचो इसके बारे में थोड़ा. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1024 एग्जैक्टली कहाँ से आ गया? 1024 क्या है? 2 power 10, करेक्ट. जब 2 power 10 हो जाता है, ठीक है, दिस वैल्यू, देन इट इज 1 किलोबाइट. ठीक है, cool. Apart, like it's very drifting away from the solution. ठीक है, 1 kilobyte, 1 megabyte. You guys know these things, right? Megabyte is 1024 kilobyte. Okay, kbs, right? So cool. Whatever. You know what about gbs also? ठीक है, 8 GB मतलब कितने सारे bits होंगे? Just imagine 1 byte में इतने bits होंगे, right? 1 kilobyte में इतने bytes होंगे, 1 megabyte में इतने kilobytes होंगे, right? You guys know about this thing, but this is an off topic. The reason why I'm telling you this thing is कि the data types which you are using, ठीक है, I told you this thing multiple times कि
कि हमारा जो इंटीजर है उसमें 2 पर 10 पर 9 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, राइट? आई टोल्ड यू दिस थिंग, राइट? इंटीजर, राइट? और उसका सबसे मिनिमम कुछ ऐसे ही है, राइट? व्हाई इज दिस थिंग, मतलब व्हाट इज दिस? इट्स अ मेमोरी, राइट? इंटीजर का मतलब इट्स अ मेमोरी का पार्ट है, करेक्ट? मतलब आई जस्ट पिक्ड अप, करेक्ट, आई जस्ट पिक्ड अप सम मेमोरी फ्रॉम द रैम एंड आई एम सेइंग कि दिस इज द मेमोरी, इसमें क्या स्टोर हो सकता है, राइट? उसका रेंज है, व्हाई देयर इज अ रेंज? बिकॉज this guy, the integer guy, will only be taking up to 32 bits. This is the memory limit. 32 bits मतलब 4 bytes. I'll tell you that. Ajay, I'll tell you. Wait a second. थोड़ा time दो, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में. Like one integer का मतलब है 32 bits. That is nothing but 4 bytes. ठीक है? In the same way, बाकी हमारा character का, float का, like you can just easily Google it and you'll get what is the size of everything. ठीक है? Character का मेरे हिसाब से 2 bytes है, right? And why do we use boolean? Boolean का memory कितना है? Do you want to guess what is the memory of boolean? 1 byte? No, it's 1 bit. Obviously, boolean can take only 2 values, true or false. It is just 1 bit. इसलिए boolean को यूज करना बेटर है देन इंटर, बिकॉज यहाँ पे 32 बिट्स यूज हो रहा है, वह 1 बिट में काम हो रहा है, करेक्ट गाइस? दिस इज मेकिंग सेंस? एनी सेंस? राइट? इन द सेम वे लॉन्ग, like whatever the long data type, it can take up to 8 bytes. 8 bytes का मतलब है 64 bits, correct? So this guy can hold more storage. ठीक है? I'll tell you about the storage, ठीक है, कि कैसे हो रहा है ये चीज, I'll tell you, ठीक है? But let me introduce something called, ठीक है, let me have a data type which is having only like 5 bits, ठीक है? And these 5 bits are like this, ठीक है guys? हाँ, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा यार, मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है? लेट अस अज्यूम गाइस वी हैव 5 बिट का मेमोरी है, ये 5 कितना बिट है? 5 बिट का मेमोरी, ठीक है गाइस? लुक एट दिस, ठीक है? डू यू गाइस एग्री वेटेज इस तरफ इंक्रीज हो रहा है? गाइस, राइट? तो लाइक अगर मैं, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द वैल्यू, तो मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ. कुछ 34 या कुछ होगा यार, कितना है? 2 4 8 16 18 होगा, हाँ 18, sorry, it's 18 na. So if I make this 0, then what will happen? What is the 0? What is the value? This is 2. If I make this 1, then what is the value? It is 19, correct? Guys, can you see this difference? Ki if I'm making the change here, it is not making much change. Like देखो, like इस पे और इस पे, like if I change 1 bit here, it is not making the much change in difference. But if I made the change here, it is making a huge difference because the weightage is increasing in this way. इसका weightage है 2 पर 0, इसका weightage है 2 पर 1, इसका weightage 2 पर 2, इसका weightage 2 पर 3, 2 पर 4, right? So weightage increase हो रहा है, correct? So I can call this as LSB and this has MSB. So what does LSB means? LSB मतलब least significant bit. ठीक है? MSB मतलब most significant bit. क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मतलब सबसे लेफ्ट वाला, मतलब सबसे राइट लेफ्ट मोस्ट वाला will be the MSB because this is most significant, very significant, क्योंकि इसका weightage increase हो रहा है. Do you guys agree? कि उसका weightage बहुत ज्यादा है, like this guy has more significance than this guy. इसका इतना भी weightage नहीं है, so इसका significance कम है, so that is the reason it is called least significant bit.
like this is a terminology that you might be using in further, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? Any doubts? Any doubts in this? ठीक है? अब let me talk about a variable which is having 10 bits. मतलब एक मेमोरी है जिसके पास 10 बिट्स है, ठीक है? 10 बिट्स मतलब बिट्स का मतलब पता है ना, यहाँ पे एक वैल्यू जा सकता है, यहाँ पे एक वैल्यू जा सकता है, 10 बिट्स है तुम पे, राइट? दिस इज अ मेमोरी, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर मेमोरी में समझ लो एक्स मेमोरी है, इट्स नॉट इंट और व्हाटएवर, 10 बिट्स है इसमें, ठीक है? लाइक कैन यू टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस? देखो हर बिट में टू ऑप्शंस है, इधर इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0. हर बिट पे टू ऑप्शंस, इधर इट कैन बी 1 और 0. हर बिट पे टू नंबर्स है, 1 और 0, राइट? राइट, सो हर बिट पे यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है? सो डोंट यू थिंक कि अगर एक बिट है देन यू ओनली कैन मेक टू नंबर्स, राइट? लेकिन अगर दो बिट है, लाइक यू कैन हैव टू ऑप्शंस here, टू ऑप्शंस here, मतलब 0 0 एक होगा, 0 1 एक होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा. करेक्ट? सो लाइक कैन यू सी टू बिट्स है देन 2 into 2 होता है, the number of combinations that could be possible. The same way 10 bits है, right? It will be 2 into 2 into 2 into, in that way till 10 times, right? Right, it will be 10 times, right? So it is nothing but 2 power 10. So 2 power 10 values can be stored. 2 power 10 values can be stored in this particular memory, correct? So the values are like 0 से लेकर 10 power 2 power 10 minus 1 तक, है ना? Like the first value will be 0, last value is going to be 2 power 10 minus 1. But these are number of values. But the range is this. Do you guys agree with me? Hello? Correct? It's not too, like 24 values hai, but the last value is going to be 2 power 20 10 23 because 0 be included है, so in a way 1024 ही हो गया at the end. Do you guys agree with me? Hello? Let me just get some watchman's. ठीक है, guys, did you understood this concept of how the range and such things happen? Do you guys agree with me? Are you guys understanding this thing? ठीक है, I only took 10 bits just to explain कि the range of any memory, ठीक है? So you have a memory which is having 10 bits. So what are the range of the elements that can be stored, the number of values that can be stored? I'm just trying to explain, okay? So by this as a foundation, I'll be explaining you how much values this guy can store, okay? So let me just talk about this thing about our integer. You know that integer has 32 bits, right? So accordingly, like the number of values are supposed to be 2 power 32. Do you guys agree? Right? So these are the two, there are 2 power 32 values. Let me talk about the range, ठीक है? तो अगर if I say integer में अगर negative numbers store में होंगे, only it's an unsigned integer. I'm just taking it this term.
for the first time unsigned integer है. If it's an unsigned integer, मतलब like only positive values है, then can you guys guess the range of the values? It will be 1, it will be 2, and it will be 2 power 32 minus 1. Do you guys agree with this fact? Correct? यार किसी को है जो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पूरा बिट बिट बहुत ज्यादा बिट बिट हो गया, तो बताओ, समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे. Okay, Chirag. So basically what I'm saying is that this guy has 32 bits. As you guys studied, if you have 32 bits, the number of values you can store is 2 power 32. Do you guys agree with this, Chirag? Right? So what I'm saying is, just like the previous example where there are 10 bits, you can see that the values are ranging from 0 to 2 power 10 minus 1. Right? The same thing, let me write it here. To 0 से लेकर 2 power 32 minus 1. Right? Because 32 bits है. Do you agree with this thing, Chirag? Hello? Okay. So बस यही है. Now let me talk about, like, this is not the scenario if in the actual integer, but if you remember negative numbers भी store होता है, right? तो ये चीज पूछोगे कि सर आपने 32 बिट बताया तो इसमें इतने वैल्यू स्टोर होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं फिर इंटीजर में? So I'll tell you about that. Let me tell you about the signed thing. ठीक है, but this should be clear in your mind if at all the integer is unsigned. ठीक है, these are the values that can be stored. ठीक है, I hope this is clear for everyone. And with this thing clear, shall I move forward? I'll tell you, Abhishek. I'll tell you. Don't worry. I'll tell you that. Okay. So let me tell you about कि how the negative numbers are stored. ठीक है, अब तक तो काफी सही था, पूरा नेचुरल नंबर्स को ले लिया और मैं बता दिया कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है. एवरीथिंग इज फाइन, बट हाउ डज द नेगेटिव वैल्यूज बी स्टोर्ड फिर? मतलब ये तो डाउट आना चाहिए तुम लोग के दिमाग में कि यार नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से आ गया. करेक्ट? ठीक है गाइस, डोंट टेल द थिंग्स इफ यू ऑलरेडी नो. ठीक है, अगर पहले से पता है डोंट टेल इट. ठीक है, तो काफी लोग को लाइक फील दैट कि उनको नहीं पता, ही पहली बार सुन रहा है, तो लेट देम हैव दैट थिंग लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, डोंट नेम दोस थिंग्स. ठीक है, ओके. सो या, सो लेट मी टेल यू दिस थिंग. जैसे मैं बता रहा था रेंज का, समवन इज आस्किंग अबाउट द रेंज. ठीक है, सो देखो, लाइक आई टोल्ड यू कि अगर 2 बिट है तो इसमें 0 हो सकते हैं, इसमें 1 हो सकते हैं. यू हैव 2 ऑप्शंस. वैसे इसमें 2 हो सकते, इसमें 0 हो सकते हैं, इसमें 1 हो सकते हैं. 2 ऑप्शन. ठीक है, सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, लाइक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होंगे? 2 into 2, that is number of numbers that I can be found, that is 4. Correct? Right? So same way वैसे 10 एलिमेंट के लिए 2 into 2 into 2 into 2 वैसे होगा. These are number of combinations. If you guys understand the permutations, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा कि 10 बिट है, हर एक में 2-2 कॉम्बिनेशन, तो कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं. सो दैट इज 2 power 10. ठीक है, उसका रेंज होगा 0 से 2 power 10. आई टोल्ड द सेम थिंग फॉर द अनसाइंड इंटीजर्स जिसमें साइंस नहीं होता. लेकिन दिस इज नॉट द सिनेरियो. ठीक है, यहाँ पे यू हैव द साइंड इंटीजर. ठीक है, हाउ डज द साइन वैल्यू बी, साइन वैल्यू कैसे स्टोर होता है, दैट इज द क्वेश्चन. राइट? सो लेट मी टेल यू. अक्षय, हाउ 4 पूछ रहे हो तुम. सो जस्ट सी दिस मैन कि इफ यू हैव 2 वैल्यूज, ठीक है, it can be 0 0, it can be 0 1, it can be 1 0, it can be 1 1, right? 4 values हो गया ना. Correct? Because there are 2 bits, the combinations. यहाँ पे 0 है और इसमें दो possibilities है. Correct? यहाँ पे 1 है और 2 possibilities है. So in that way, like a long map will be formed. I hope you guys don't have any problem in this, right? तो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, let me tell you about the sign magnitude. ठीक है, if you have negative numbers, how is that so? So let me tell you, for the sign bits, ठीक है, for the sign values, ठीक है, the MSB, like पूरा whole array होगा तुम्हारा, right? Like array in the sense पूरा bits होंगे, right? But you have something called MSB, right? MSB मतलब सबसे leftmost bit, so सबसे like the most significant bit is called MSB. Do you guys agree? Right?
ठीक, unsigned मतलब there are no concept of sign, only the positive values are being stored, that is called unsigned. But if you remember कि int equals to -3 भी store करते हो ना, int x equals to -3, how is this being possible? ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है. MSB is called signed bit. It's called signed bit. Signed bit का मतलब है कि यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है. अगर 0 है ना, it is a positive value. This whole bit is a, like this whole memory is a positive value. अगर 1 है, it is a negative value. ठीक है अक्षय, सी साइंड और अनसाइंड कुछ नहीं है, ठीक है. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि यू हैव 2 पर 32 वैल्यूज, ठीक है. ऑल वैल्यूज आर, मतलब यू आर ओनली कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, अभी के लिए ऐसे समझो, ठीक है. ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब साइंड नहीं है, लाइक देयर इज नो साइन, कांसेप्ट ऑफ साइन. साइन मतलब प्लस और माइनस, है ना, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ओनली अनसाइंड वैल्यूज. देन the range will be 0 से 2 पर 32 minus 1. Is that cool? Abhishek, Abhinav, what? Is that cool? Akshay? Right? But if at all there is a concept of sign, ठीक है, मतलब signed है, signed in the sense कि positive और negative values. Sign बोलते हैं ना, positive sign, negative sign. Right? So if at all it's a sign value, ठीक है, so how does the sign number stored? मतलब minus numbers कैसे store होंगे? That is the question. Right? So for that thing, we have something called MSB, which will be acting as a signed bit. ठीक है, signed bit का मतलब क्या है कि if this value is 0, ठीक है, like यहाँ this bit is reserved, ठीक है, this bit is reserved for the signed values. ठीक है, मतलब अगर ये बिट 0 है तो इस पूरा वैल्यू को पॉजिटिव समझेगा, अगर ये बिट 1 है इस पूरा वैल्यू को नेगेटिव समझेगा. कैसे समझेगा? I'll tell you, ठीक है, but this is the concept. One bit will be reserved, that will be NMSB will be reserved, and that bit, in that bit you'll be having positive or negative value. You'll be having this as the like count की तरह, टिकट की तरह बताएगा कि हाँ ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है. Are you getting it? Sagar, we won't receive any extra bit, we'll be using the same bit for that thing. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी complicated नहीं है, we are just using this bit to see what is the sign of the number. ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे स्टोर होंगे नेगेटिव नंबर्स, बट तुम लोग का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, ठीक है. So let me just check if I have the, so just wait guys. तो एक बार इसको ही देखना, ठीक है, just see this thing, ठीक है. LSB will be same, ठीक है, बोले MSB will be reserved for the sign, इसको साइन बिट बोलने लगेंगे, और based on this value we will be deciding कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. I want to give the break, but just a second. Let me just. Guys, I'm sorry, I muted myself. I'm just
So we'll take a break in few minutes. ठीक है? I'm sorry. आज थोड़ा लेट होगा. ठीक है? I'm sorry for breaking the schedule of you guys. थोड़ा और पढ़ते हैं because we didn't actually achieve anything great yet. So I think हम like let's understand few things. ठीक है? Then we can take a break in some 20 or 25 minutes. ठीक है? Is that cool? Shall I continue? ठीक है? Just a second. If you go, I have a doubt on floating. I'll tell you that about the floating numbers. Let's focus on whatever I'm teaching right now. Okay. So to learn the new things, like when I was teaching about the positive integers, some students were asking about the negative integers. How are the negative integers work? Okay. I'm going to teach you about the negative integers. Okay. You just have to maintain the patience. Okay. Because this is theoretical part, right? Practically, you won't be doing all these things. Okay. Practically, you won't be even taking these things yet. Okay. So just have some patience. Okay. Listen to, just focus on what I'm teaching right now. Okay. And pay your focus here. If you're so eager, if you're very anxious to learn about other things while I'm teaching something else, okay, you won't be learning this and you won't be learning that as well. Okay. So don't do that. Okay. Shall I continue? Okay, I told you about the sign bit. So let me keep it aside for that for some time. Let me teach about few other things. Okay. Then only it will make sense. Okay. Let me tell you about a concept called one's complement. Are you guys with me? Hello? There's a concept called one's complement. Okay? Where you have a number, कोई भी number ले लो, 1, 0, 0, like it's a binary number, 6 bit का binary number है, ठीक है? और देख लेना, this is some 4 bit, 9 bit binary number, right? So what I'm saying is, ध्यान देना कि one's complement is nothing but, ठीक है? Flip all the bits, flip these bits, मतलब this is a number. One's complement of this number is 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. One's complement of n. Yes. Like not gate समझ सकते हो, ठीक है? मतलब हर एक bit पे like you're flipping it. जैसे 0 became 1, 1 became 0, 1 became 0, 0 became 1, 1 became 0, 0 became 1, right? In that way. I guess able to feel it how you're flipping the bits. ठीक है? Easy. ठीक है? Negation, correct. Now let me tell you about another concept that's called two's complement. Calm down, जिसको पहले से पता है. Calm down. ठीक है? इसमें अगर एक नंबर है n, सेम नंबर ले रहा हूं, ठीक है? इस नंबर को, ये कितना बिट का है? लाइक दिस इज अ 9 bit number, right? Right? So 1 2's complement is nothing but 1's complement करो पहले नंबर का, उसके बाद +1 कर देना, दैट इज कॉल्ड 2's complement. ठीक है? अब देख इसका 1's complement क्या होगा? 1 0 1 1 0 1 0 0 1, right? This is 1's complement. Now इसको +1 करूंगा. How will I +1? बताओ guys, +1 में 1 + 1 it will be 2, right? So 2 मतलब 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, right? Because this is 2, correct? फिर 1 + 0 it is 1, 0 + 0 all these are zeros, correct? है ना? यहाँ पे 1 सेट है, इसका मतलब सब zeros है, right? 0 1 0 0, I mean 1 1 0 1. Did you guys see this? And this is called 2's complement of n. ठीक है? इट इज नथिंग बट पहले तुम उस नंबर का 1's complement ले लो, प्लस करना ऐड 1. Are you guys understanding what I'm doing right now?
क्या फायदा है इसका मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। सर लेफ्ट मोस्ट जीरो का मतलब नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो वैल्यू सेम ही रहेगा। आई डेंट गेट यू, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन ब्रो? डू वी यूज दिस एनीवेयर, आई मीन एन एग्जांपल? श्योर। अरे ये चीज समझ में आए कि नहीं ये बताओ यार, मैं बताऊंगा ना, क्यों पढ़ा रहा हूँ ऐसे फालतू में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ तो मतलब होगा इसका। आई टेल यू दैट, जस्ट टेल मी कि ये चीज समझ में आया कि ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया कि नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना? ये तो समझ गया ना। इसके आगे मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है? तो देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, फ्लिप करो। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐड करो, राइट? तो लेट मी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल जिसका तुम टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक है? सम वैल्यू लाइक 0 1 1 0 1 1 1 1 0, ठीक है? ये नंबर है n, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ बच्चा। इफ समवन आस्क यू व्हाट यू विल डू, like what you will be doing is you'll be just taking the ones complement of it, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है? उसके बाद you will just add 1 to it, मतलब 1 यहाँ पे ऐड करना। 0 plus 1 is 1, 0 0 0 0 1 0 0 1 0, this is the two's complement of n. am I correct? n में जो लेफ्ट मोस्ट जीरो है वो अगर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। आई वाज सेइंग दिस, हाँ इट विल बी सेम ऑब्वियसली ब्रो। सागर ये चीज तो समझ में आ गया तुम्हें, है ना? ऑब्वियसली जीरो ही है, जीरो का मतलब जीरो ही है, राइट? देखो गाइस, लाइक डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? लेट मी गो बैक, थोड़ा पीछे जाके मैं एक चीज शायद बताना भूल गया, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज कि आर यू गाइस क्लियर विद द बेस थिंग? आर यू गाइस क्लियर कि मैं तुम्हें कोई भी बेस दे दूंगा, like you will be asked, you will be able to convert it value? Yes. देखो, what I'm trying to say is guys कि देखो, any value in this world can be represented with any base. Do you guys know about hexadecimal values? Have you guys heard about this thing, hexadecimal? है ना, base 16। तो इस फॉर्मेट, like this is another format of storing the values। इसमें वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2, वैसे 9 डिजिट्स, मतलब 10 हो गया ये सब, है ना? इसके आगे 10 is represented as A, 11 is represented as B, उसके बाद C आता है, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद F, ठीक है? F मतलब 15 है, ये 14 है, 13 है, 12 है, right? And this is 11 and this is 10 and this is 9. Do you guys know this thing? है ना? तो वैसे ही like any number, if I give you a number like this, इसका नंबर क्या बताओ, like if I ask you 2F A, right? So it's a hexadecimal number. So what you will be doing, 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2, right? It is nothing but 2 into 16 power 2 plus 15 into 16 power 1 plus 10 into 16 power 0. ये करोगे ना guys? करेक्ट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई भी बेस दे दो मुझे, उसका नंबर मैं बना सकता हूँ, राइट? इट्स द सेम वे, दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली डू इट। मतलब तुम लाइक द वे यू आर एबल टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, डिवाइड बाय 2 किया ना, वैसे डिवाइड बाय दिस बेस कर दो जो भी वैल्यू है, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी इन माय वाइवा। वाइवा समझते हो ना, कॉलेज का, राइट? सो माय द इंस्ट्रक्टर, द टीचर, द लेक्चरर, द प्रोफेसर, he has asked me a question। उसमें बोला था कि can you tell me what is this value, like can you convert this value, ठीक है, into a decimal value? This was the question। can you guys do this? बेस 3 है ये, ठीक है? कैसे करोगे? तो मैं तो शुरू हो गया यार ऐसे करने में, ऐसे 1 ये इसका पावर 3 पावर 0 है, इसका पावर 3 पावर 1 है, इसका पावर 3 पावर 2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1 into 3 पावर 2 प्लस 0 into 3 पावर 1, तो 3 into 3 पावर 0 ऐसे करने लग गया। बता दो इसका आंसर जो भी आया, राइट? सो सेड इट्स रॉन्ग, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट?
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है वैल्यू, बेस 3 है, तो वैल्यू कैसे 3 हो सकता है भाई? तो बोला कि ये तो मतलब गलत है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, तुमने ये चीज फाइंड ही नहीं किया। ही वांटेड टू चेक कि मुझे वो आता, द क्वेश्चन इज नॉट टू मेक मी कन्वर्ट दिस थिंग, ठीक है, द क्वेश्चन इज कि टू सी कि इफ आई रियली नो व्हाट आई नो अबाउट द नंबर सिस्टम्स, राइट? करेक्ट। तो फिर क्वेश्चन बदला यार, कुछ कुछ चेंज किया, लेकिन ए मिल गया मुझे, ए ग्रेड मिल गया, बट लाइक आई गॉट ट्रैप्ड फर्स्ट टाइम आता, लाइक यू कांट ब्लेम मी, ठीक है, ठीक है, बट दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। बेस 3 है, द वैल्यूज कैन ओनली बी 0 1 और 2, मतलब जो भी रिमाइंडर्स बन सकते हैं ओनली वही हो सकता है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी नंबर दे दो, किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको, और जितना कम बेस होगा उतना लंबा वैल्यू होगा। यू कैन सी दैट, राइट गाइस? ये नंबर देखो, लाइक इट्स अ ह्यूज नंबर, बट इट इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल वैल्यू, स्मॉल स्ट्रिंग, करेक्ट। इसी को मैं बाइनरी में लिखूंगा तो बहुत सारे वंस और जीरोस होंगे। डू यू गाइस एग्री? ये वेटेज ज्यादा है, ठीक है। ये चीज मिस हो गया, बट इट हैज नथिंग टू डू विद, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एनी बेस नंबर का हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, बाइनरी, राइट, दिस वैल्यू बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस 6, कुछ भी हो सकता है, राइट? So if I ask you to convert a base 5 value, कोई नंबर दे दिया बेस 5 वैल्यू टू अ बाइनरी वैल्यू, हाउ विल यू डू इट? ये क्वेश्चन पूछा गया था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइवा में। टेल मी दिस थिंग, एक बेस 5 का वैल्यू दिया, सम वैल्यू लाइक 1 3 4 1 3 4 0 समथिंग लाइक दिस, बेस 5, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी? सिंपल, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, करेक्ट। ऑक्टल नंबर में, सी ऑक्टल में व्हाट, आई एम नॉट श्योर, सी देखो यार, मतलब लाइक इफ एट ऑल दिस इज द नंबर 2 1 0, राइट, इफ इट इज अ नंबर ऑफ बेस 5, तो इसका पावर क्या है? 2 5 पावर 0 है, इसका पावर 5 पावर 1 है, इसका पावर 5 पावर 2 है, इसका पावर 5 पावर 3 है, ठीक है। 5 पावर 3 इज नथिंग बट 1 into 5 पावर 3 प्लस 3 into 5 पावर 2 प्लस 4 into 5 पावर 1 प्लस 0, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 25 into 5 दैट इज 125 प्लस 3 into 25 that is 75 plus 4 into 5 that is 20, ठीक है। This particular thing is nothing but 200 plus 20 that is 220, agreed? Hello, है ना? So this 220 को तुम कर दो डेसिमल में, 220 divided by 2, ऐसे ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, I'll skip this thing for now, ठीक है। I can keep on doing it, बहुत लंबा होगा, ठीक है, division, but you can easily found, so you converted this number into binary, so this was the next question asked to me in the Viva, right? So I'm just letting you know this is out of the syllabus, you won't be asked in such depth, you're only supposed to learn about binary numbers, but having extra knowledge is not bad, okay, क्योंकि तुम सब बड़ा बड़ा कंपनी फोड़ने वाले हो, ठीक है, ठीक है। So just having it, it's not going to harm, ठीक है। Binary to base 5 is also the same thing, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर बेस में कन्वर्ट कर देना, whatever, right? Great. सुनो, ठीक है। You guys learned what is 2's complement, you guys learned what is 1's complement, ठीक है। You guys learned about various base systems, right? You guys practiced about 2's complement, ठीक है। Now let's come back to this thing, sine thing, ठीक है, ठीक है। So how are these things calculated, ठीक है। चलो, let me talk about this thing, एक int x equals to -4 है, ठीक है। गाइस ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, हो गया बहुत खूब से भी हो गया, ठीक है। लिसन हियर, you have int x equals to -4, ठीक है। so my question is 4 को कैसे स्टोर करोगे यार? 4 how it will be stored? It will be 0 2, it will be 1,
right? It will be 0. So it will be this way, right? So 1 1 0. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ये चीज, ठीक है. दिस इज नथिंग बट 4, राइट? डू यू गाइस एग्री? डू यू गाइस एग्री, राइट? लेकिन -4 है, अब -4 को कैसे करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन, है ना? सो नाउ लेट मी टेल यू, एवरी नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनना, every negative number will be stored in the integer as its positive numbers 2's complement, उसका 2's complement की तरह स्टोर होगा, ठीक है? मतलब MSB में पॉजिटिव या नेगेटिव, आई टोल्ड यू राइट. सो लेट मी जस्ट शो यू इट, ठीक है? 100 का 2's complement क्या है गाइस, 1's complement क्या होगा इसका, 0 1 1, right? So wait, this is talking about int na, I'm talking about int. Let me assume it is a bit of having some bits, so let me just mark it as some bits of size 6, ठीक है? तो ये हो गया 0 0 0 1 0 0, right? So this is how 4 is represented. Agreed guys? I didn't tell anything yet, ठीक है? I'm just saying any negative number will be stored as its positive numbers 2's complement, ठीक है? मतलब देखो पॉजिटिव नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, डू यू गाइस एग्री? ठीक है? So if I take the ones complement of it, it is going to be 1 1 1 0 1 1, right? This is ones complement. 2's complement में इसको ऐड करना होगा +1, है ना? So it's going to be 1 1 1 1 0 0, correct? Hello? So I'm just showing you an example, Arundhati, ठीक है? क्योंकि integer लूंगा तो I need to write 32 bits ना. So I'm just showing an example of converting a 6-bit value into its 6 complement, its 2's complement, correct? So if I had to take an integer, तो 32 bits के साथ operate करना पड़ेगा. So I'm just showing you, बहुत सारे zeros लिखना पड़ेगा. So I'm just showing you using a smaller example. You can extend it, ठीक है? So just see this. It's the actual representation of 4. I'm taking its ones complement. I'm adding 1 to it. This say it will be forming in this type, in this way. This is how -4 is stored in the 6-bit value. तुम देखो यहाँ पे MSB, just look at it, MSB. ये 1 है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, करेक्ट? तो ये अपने आप समझ जाएगा कि इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? सो दिस वोंट बी रेड एज समथिंग लाइक कि 2 पावर 0 2 पावर 1, इट वोंट बी रेड इन दिस वे, ठीक है? इसका 2's complement लेके देखो. Guys, I didn't tell you about one more thing, ठीक है? So if you have one more thing, like if you have this thing, only a 4-bit value, if you take a 1's complement of it, it's going to be 0 1 0 0 1 1, right? If you add 1 to it, this is 1's complement. If you add 1 to it, it is going to be 0 1 0 0. Agreed? Hello? Right? So this is the 2's complement of it, right? So if I take the 2's complement of it, मतलब वापस 1's complement लेना होगा, that is going to 1 0 1 0 1 1. इसके बाद add 1 करो इसको, ठीक है? It's going to be 0 1 1 0 0, इसका 2's complement. Guys, एक बार देखो इससे ध्यान से, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो. Do you guys agree कि 1's complement मतलब किसी का 2's complement will again give you the same number? Do you guys agree this is 1's complement? Okay, so calculating a 2's complement involves 2 steps. One is 1's complement लो, उसका +1 करो, correct? Right? So if you take the 2's complement of it, ठीक है, it is giving the same number, right? 2's complement of it is the same number. It will return to the same number. Do you guys agree with this thing? Hello? ठीक है? This cool concept is going to be used here, ठीक है? किसी भी नंबर का MSB 1 है, like the compiler understands कि ये नेगेटिव नंबर, ठीक है?
तो वो नेगेटिव नंबर समझ जाएगा, राइट? इवन यू शुड अंडरस्टैंड द नेगेटिव नंबर। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, तुम ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे उसको फिर, ठीक है? व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 0 0 0 0 1 1, फिर +1 करना, दैट इज टूस कॉम्प्लीमेंट। तो तुम देखोगे कि इट इज 4, तब तुम समझोगे ओ ये तो 4 है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट एज -4। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? I'll tell you an easy number, ठीक है? I'll give you an easy example, but let me repeat it for now, ठीक है? Let us assume I have a 6-bit data type, 6-bit, 6 bit है इसमें, ठीक है? इसमें से like I want to store -4, ठीक है? तो -4 कैसे स्टोर होगा? It will be stored as 2's complement of 4, ठीक है? What is the decimal representation of 4? This is this in the 6-bit value, ठीक है? उसका 2's complement होगा ये, तो इसकी तरह हमारा x में स्टोर होगा, like the 6 bits of x will be stored in this way. But when the operations के लिए जब काम करने आएगा, it will see that MSB, this guy MSB is 1, इसका मतलब it's a negative value, क्योंकि x is a signed value. तो like it will understand, अच्छा माइनस तो है आंसर में, इसका 2's complement देखो क्या है, it is this value, so it is -4. So you will be understanding it in this way. Are you guys getting it? It's confusing. I agree, पहली बार ऐसे लगेगा, ठीक है? It is not 6-bit. I'm just taking for an example. 32-bit होता है इंटीजर तो, ठीक है? तो देखो अगर if you are taking a 32-bit, so like 32-bit समझ लो यहाँ पे, it's going to be in this way. यहाँ पे 0 होने वाला है for 4, ठीक है? But if you take the 2's complement of it, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है? मतलब it's a negative value, ऐसे समझो। I know that it might be looking little complicated for you guys for now, ठीक है? तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, if you guys fine with it, और like I hear request from you guys कि थोड़ा जल्दी करें, right? So we can take a break of 10 minutes, okay, and then we can get started. Are you guys fine with that? उसी नंबर का सेम नेगेटिव, करेक्ट करेक्ट मोहम्मद शबीन, ठीक है? कोई भी नंबर, ठीक है, उसका 2's complement लोगे, उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है? I'll repeat it after the break, लेकिन एक और बार जनरली बोलने दो मुझे। -4 will be stored as 2's complement of 4 units because MSB 1 होता है, 4 ऐसे स्टोर होगा, लेकिन -4 ऐसे स्टोर होगा। और जब भी लाइक तुम इस नंबर को दोबारा में बोलोगे साइंड वैल्यू है, तो यू नीड टू सी MSB 1 है कि 0 है। अगर 1 है ना, तो समझ जाओ कि 2's complement है, तो उसका वापस 2's complement ले लो, ठीक है? जिससे तुम्हें एक्चुअल वैल्यू क्या पता चलेगा। मैंने ये चीज दिखाया ना, 2's complement का 2's complement will give you the same number, the same concept here. You try to reverse the 2's complement, see कि what is that number actually, ठीक है? करेक्ट। 2's complement का 2's complement क्या होने वाला है? सेम नंबर आने वाला है, राइट? सो इसको देखकर मैं बोलूंगा कि इट्स अ नेगेटिव नंबर, सो 2's complement लेके एक्चुअल वैल्यू क्या पता करो और नेगेटिव लगा देना उसका। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। कंपाइलर का अलग है, कंपाइलर विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे। आई विल टेल यू दैट इन फ्यू मिनट्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट फॉर नाउ इन दिस वे। ब्रेक लेगा इस, ठीक है? So we'll meet back in 10 to 15 minutes. So will 2's complement of every number to get its negative number, correct? ठीक है? Okay, we'll be back in 15 minutes, ठीक है? और 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, जैसे जनरल ब्रेक, ठीक है? I'll end the class soon, ठीक है? 11 o'clock तक टाइम कर दूंगी if you want, ठीक है? So cool. 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स रिटर्न एट 10:31, ठीक है? थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ, ठीक है? And then we'll continue till 11:10 or 11:50 and then we will stop, ठीक है? Guys,
ठीक है, जल्दी कर लेना, सॉरी फॉर दैट, बाय, आई बी बैक।
Yeah. Hi. Hi guys. I'm back. What? I'm sorry, I didn't get you. Okay, Akash. You're saying that for 4 and for -4, the 2's complement is going to be same. No, it's not going to be same. Just think. There you go. 4 ka 2's complement, you'll be getting a value, right? That value is used to represent -4. Okay? But if you calculate the 2's complement of -4, matlab 2's complement of this, you'll be getting 4. Negative number cells. Okay, correct. So based on the for a number x, -x is the 2's complement of x. For a number -x, x is the 2's complement of -x. This is what is taught of see thought so far. Okay, correct. You're correct, Rani. Everything is correct, but it's just the representation. Okay? How does a -4 get represented in a bits? Okay, in binary, it is nothing but it is just represented as 4 का 2's complement. Okay, whatever that value is, that value, okay, is used to represent it as -4. Okay, how do you judge if it is a normal number or if it's a negative number? Based on this bit, okay, based on the MSB. Look at the MSB. If at all I gave you a binary representation, I told you, you just look at the MSB. Okay, if the MSB is 1, it means that this value is a negative value. Okay, बस negative यहाँ पे लिख देना and try to find the 2's complement of this value. 2's complement find करना. Whatever that value comes, calculate it as normal and it will be -4 या जो भी है, right? मतलब 4 आएगा, right? Put it in front of it, just put minus in front of it. ठीक है? Just look at the -b. If you feel that's it's 1, try to take the 2's complement of it and whatever value you get, उस वैल्यू का सामने जस्ट पुट नेगेटिव. बस थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार सोचो इसके बारे में. कुछ डाउट है? एग्जैक्टली बताओ डाउट क्या है. आई विल टेल यू. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. हाउ डज -4 गेट रिप्रेजेंटेड? -4 is represented as 2's complement of 4. ठीक है? So this is the binary representation of 4 in 6 bits. ठीक है? And if you take the 2's complement, it will be this value, right? And if you try to find the, like, this would be the value, like अगर -4 का binary representation देखोगे ऐसे दिखेगा तुम्हें, right? तो तुम्हें क्या करना होगा, like you will be just checking the MSB. If the MSB is set, it means that it is a negative value. ठीक है? ठीक है? Always MSB will be reserved for the sign bit. ठीक है? It will be set as a negative value. ठीक है? उसके बाद what you will be doing is you will be just taking the 2's complement of it, and whatever value you get, you can see that it's 4. Okay, you just put minus in front of 4, so it is -4. So this is -4. This is nothing but -4. Are you getting it, guys? There's a number given to you. Okay, ऐसा. It's a 5-bit value, only 5-bit, only 5-bit memory. Okay, can you tell me what is this value? Can you guys tell me what is this value? So the people who are saying 24, it's wrong. Sorry, my bad. I should have said this is a 5-bit value, signed. It's a signed memory. Matlab, this particular MSB, this is the MSB, right? This is reserved for sign.
तुम देखो इसको, ये 1 है, मतलब इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, दिस वैल्यू इज अ नेगेटिव वैल्यू, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू है तो कैसे करोगे, यू जस्ट पुट अ माइनस एंड इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, इट इज 0 0 1 1 1, add 1 to it, it will be 0 1 0 0 0. What is this value? It is 8 if I'm not wrong, right? So 8 है, so ये value -8 है, this value is nothing but -8. Are you guys understanding what's happening? Before सही बोल रहे हो, ठीक है, but if it is an unsigned value, ठीक है, अगर वो signed है, then MSB is reserved for sign in signed values. Yes, it will be mentioned, ठीक है, it will be mentioned, ठीक है. So these are completely generic things, ठीक है, but that's how it is, ठीक है. But अगर तुम int लिखोगे जावा में, it is always signed, ठीक है. लेकिन if you look at C++, में you have something called unsigned it and you have something called signed it. ठीक है, cool guys, shall we move forward? अगर मैं तुम्हें ये वैल्यू दिया, it's a 3-bit signed memory, if I say this, what will be your answer? So -2, correct? How? देखो MSB is set, so it is minus, इसका 2's complement लो, it is 0 0 1, plus 1 करो, it will be 0 1 0, it is nothing but 2, so it is -2, correct? This is making sense, right? So this is completely theory, okay? I'm just telling you how these things are stored, okay? How the values are stored, how about the 2's complement, about these things, okay? In a way, they are not these things, okay? Now see this thing, guys, ठीक है. एक बार ध्यान से सुनना है इसके बारे में. अगर समझ लो we have a 3-bit, only 3-bit signed memory, सब 0 0 0 होंगे, फर्स्ट इसका वैल्यू होगा 0 0 0. Okay, let me just talk about 3-bit unsigned memory, ठीक है. I'm just talking about this, ठीक है. 0 0 0 होगा, listen to me, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, right? 1 0 1, right? 1 1 0 1 1 1, ठीक है. So see, I added 1 to it, ये बना, मैं 1 ऐड किया इसको, ये बना, 1 ऐड किया, ये बना, 1 ऐड किया, ये बना. Do you guys agree with this statement? Hello? Correct? Add 1 ऐड किया, ये बना, 1 ऐड किया, ये बना, 1 ऐड किया, ये बना. अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा? तो जो ये चीज बोल रहा ना, you guys are correct, but it is just 3-bit value, correct guys? It's a 3-bit value, correct? So this thing will be lost out in the space, मतलब गायब हो, correct? It will be 0 0 0, which is back here, correct? So all the numbers in the all integers, ठीक है, they are going to be in this way, ठीक है. ऐसे ऐसे जाएगा, 7 तक गया, उसके बाद it will become 0 again, ठीक है. They just move in a circle, so this is called overflow, ठीक है. यहाँ पे overflow हो गया, right? So this is exactly what happens in the integers as well. If you push its limit, 3 bit से ज्यादा limit push करोगे, that will be lost and they will go to space, मतलब they will go to space and they will rotate. Now let's talk about 3-bit signed values, ठीक है. 0 0 0, जस्ट द अर्थमेटिक्स, ठीक है. एक बार ध्यान से सुनो इसको, लाइक अभी तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि 2 उस कॉम्प्लीमेंट क्यों है, राइट? 0 0 1 0. Now see, the arithmetic happens in the same way, guys. The arithmetics are going to happen in the same way, ठीक है. It is going to be this, clear?
+1 किया 1 हुआ, राइट, +1 किया 2 हुआ, +1 किया 3 हुआ, करेक्ट। +1 करूंगा तो क्या होगा अर्थमेटिक्स के हिसाब से, ये होना चाहिए, एग्रीड, करेक्ट। हाँ यही होता है, लाइक बाइनरी का अर्थमेटिक्स वोंट चेंज, ठीक है, इट्स जस्ट द रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विल चेंज, ठीक है। इसके आगे ये होने वाला है, इसके आगे ये होने वाला है, इसके आगे ये होने वाला है, इसके आगे अगेन 0 0 0 पे चला जाएगा, राइट। इट्स द सेम थिंग, +1 is not going to change, but it's a signed bit, signed है। So what is this value? Can anyone tell me? It's -4. No. What is this value? नहीं, +0 नहीं है। See this value में, just see this. It's a 1 0 0. इसका MSB is set, मतलब it's a negative value. Agreed? It's a negative value. Wait, it's a negative value. So let me take a 2's complement of it. 1's complement ये होगा 1 1 1. 2's complement होने वाला है 1 0 0. This is 4, right? So this is -4. This is the case where both the things are same, है ना? 2's complement is the same thing as this, but it is -4, right? इसमें देखो, what is this value? MSB set है, it means it's a negative value. Take the 2's complement of it. 1 1 1. Sorry, I'm sorry. ये क्या कर दिया मैंने? 0 होने वाला नहीं है, right? So it's going to be this, correct? So this is 3, correct? So it is -3. यार -4 + 1, what is that? -3, right? Guys, -4 + 1 is -3, right? That's exactly what's happening. See this again. See this again. यहाँ पे +1 क्या? ये आया, right? So what is this value? MSB set है, so it's a negative value. इसका 2's complement लो. That is, this is 2, so it is -2. This is how -2 is stored in a 3-bit value, correct? Mind this, it's a 3-bit value, ठीक है। और ये देखो 1 1 1 माइनस है, कन्वर्टेड to be 1, क्योंकि 0 0 0 होगा +1, it is 2's complement, तो ये -1 हुआ, right? And then if you add 1 again, it will become 0. Don't you think it's happening the same way? 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद -4 हो जाता है, उसके बाद -3 होता है, उसके बाद -2 होता है, उसके बाद -1, उसके बाद 0. Right? So it's just the representation, right? So like just because you're understanding it in a 2's complement manner, you're able to read these values, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक्स में like computer doesn't know anything, उसको ये लगेगा, वो बस यही सोचेगा कि ये MSB है, right? The arithmetics happen in the same way. Like if you do +1, it will become minus value. So let me just show you this thing. Let me just show you how this will work. Okay. So let me just select the language, Java, right? So let me just print this. Right. So it is int x equals to integer dot max value. Max value क्या है? Max value, right? So let me just print this. Let me just run this. So you can see that it is some maximum value. Okay. Now let me do this. So maximum value say I'm adding one more value to it. So क्या हो गया? It will be the most negative value here. See this. Is this making sense? अब देखो मैं वापस प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। Let me do the same thing. Let me run this. Because बाकी तो arithmetics are going to happen the same way, right? This is called overflow condition, but it is happening in a constant way, ठीक है। तो देखो पहले 0 होगा, 0 होने वाला है, उसके बाद 1 होगा. In that way it will go till the maximum value, that is 2 power 31, ठीक है, -1. Because if you don't consider this bit,
बाकी सब 31 बिट्स को कंसिडर करोगे, it can only form 2 per 31 positive values, right? So including 0, it is this value. This is the maximum value, right? This is the this value. उसके बाद if you add one more thing, ठीक है, it will be the most negative value, that is 2 per minus 31, correct? तो ये like it will keep on going 2 per 30 minus 31 minus 1 in that way, correct? Let me repeat the same thing with a different thing. ठीक है, इसको कमेंट करने दो मुझे, एंड अभी मिनिमम वैल्यू लेने दो. सर्कल में घूमेगा, राइट गाइस? सर्कल में घूमेगा, राइट? सो लेट मी जस्ट डू इट. राइट, यू कैन सी दैट इट इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. इस वैल्यू का लाइक नेक्स्ट वैल्यू ये हुआ, इस वैल्यू का नेक्स्ट वैल्यू ये होने वाला है. लेट मी जस्ट सबट्रैक्ट इट. ठीक है, यहाँ पे लेट मी जस्ट डिक्रीज दिस थिंग. Let me just remove these statements and let, oh, I'm sorry. Let me just run it. So it is going to be C. Like if you subtract one value, it will be back again to this value. This is how it happens. It moves in a circle. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब? तो देखो, like now let me clear everything about this thing. ठीक है, तो like see यहाँ पे देखो, previously जब unsigned था, you can see that पूरा 0 से, ठीक है, you are going to 2 power 3 minus 1, right? Because 3 bits है, correct? So that is what I'm saying. Unsigned होता value, it will be 2 power 32 minus 1 totally for an integer. But since it is signed, you can see that it is still going till this point. मतलब positive values are from 0 to 2 power 2 minus 1, that is 3, and then negative values are from minus 2 power 2, that is 4, right? One bit is reduced because half of the values went to negative, half of the values went to positive. Same way 32 bits के लिए, you know that there are 32 bits, right? So if at all the bits are allocated for just the numbers, then it would be definitely 0 to 2 power 32 minus 1 अगर unsigned होता तो, लेकिन signed है, right? So only 31 bits are available for the positive values, 1 bit is available for sign. ठीक है, और sign जब set हो जाएगा, बाकी ये सब bits will be negative values, right? So 0 से लेकर you will be just having 2 power 31 minus 1 values, मतलब 2 power 31 values positive होंगे, right? But 0 से लेकर 2 power 31 minus 1 values will be positive, and negative values will be minus 2 power 31 से लेकर 0 तक. These are negative, these are positive. Is this making sense? Hello? Total values will be exactly correct, Sagar. Total values will be 2 power 32 only because there are 32 bits. But 2 power, like the division, like the division will be this: half of the values will be positive, half of the values will be negative, and that is the reason maximum level will be decreasing. Cool. This is cool, guys. We don't have unsigned data type in Java, unfortunately, लेकिन C++ में है. How 2 power 32 minus 1? यार ये चीज तो पता था काफी बार, ठीक है? तो 32 बिट्स है, ठीक है? तो 2 power 32 वैल्यूज होंगे, राइट? तो 0 से लेकर 2 power 32 minus 1 तक होगा ना, क्योंकि 0 एक वैल्यू है ना, if unsigned. Shall we move forward, guys? बताओ जल्दी. Half values will be positive, half values will be negative, but the total number of values will be this only. ठीक है? But this will be if signed. ठीक है? I told you how. I gave you a simple example कि जैसे like +1 करोगे, like what's happening? The same thing is happening. The number of values is same, but these values are considered as negative values. Positive से negative तक चला जाएगा just because of doing this, right? So it will go in this way. ठीक है? So this is not very, मतलब very important topic. ठीक है, this is mostly the theoretical topic. ठीक है, so let's jump into more practical things. We just realized that
whatever number wherever you see that MSB is 1, you just understand कि ये 2's complement में saved है, तो उसका 2's complement निकाल के actual number निकालो और उसके सामने माइनस रख दो बस, ठीक है, ठीक है. We'll discuss that tomorrow as well, ठीक है. Right now let me tell you about few operators, ठीक है. अभी थोड़ा like हल्का करते हैं मोड, ठीक है. Let me tell about few operators. We have operators in bit manipulation, ठीक है. इसके साथ ही तुम अब तक bit समझे, right? So let's talk about manipulation. Something called bitwise OR. Okay, it will have just one pipe. This is one pipe, right? So do you remember this thing? Two pipes. This is called logical OR, right? ये bitwise OR है, मतलब with the values it will play. Okay, so just interpret it as like this. Interpret it as this. Okay, but यहाँ पे one or one will be one, right? 0 or 1 will be 1. 1 or 0 will be 1. 0 or 0 will be 0. ठीक है? Yeah, Kushi, that's correct. But that is only for the 3-bit value, na? For 3-bit value, both of them will coincide. ठीक है? ठीक है? Now, if I have a value like x equals to some binary value, this is the binary value, right? Some y is having some value like this. What do you think will be the answer for x or 1? Will be nothing but just bitwise OR. हर bit का OR होगा against the corresponding bit. यहाँ पे it is 1, यहाँ पे it is 0, 1, and it is 1. Correct? So what is this value exactly? ये 10 है usually और ये 1 है. Correct? यहाँ पे it is 11, right? So let me just check it if it's working or not. Okay. Let me take a value 10, right? Let me take a value 1, right? And let me just do print x or 1, x or y, and let me run it. You see that it's 11, right? So let me take another value like 3, ठीक है, और एक बार उसमें कर लेते पहले, ठीक है. 10 नहीं है, and 3 is going to be something like this. Do you guys agree? Hello? ठीक है. So you can see that, देखो multiply ऐसे याद मत करो, like if any of the bit is set, make the final bit set, बस ऐसे समझो. यहाँ पे it is 1, यहाँ पे it is 1, यहाँ पे it is 0, यहाँ पे it is 1, right? So it is x or 1, x or y, right? It is 1 0 1 1, right? It's the same thing, right? So let me just see 3 and let me do the OR. And see that it is 11, the same thing. Are you guys getting it? How this is done? Okay. So let me just teach you another operation, that is bitwise AND. Okay. Bitwise AND is 1 and 0. It will be 0. जब दोनों सेट होगा and it's just like logical AND, लेकिन हर बिट पे होगा, ठीक है. So अगर if it is 0 and 0, it will be 0. If it is 0 and 1, it will be 0. 1 and 1, it will be 1. ठीक है. This is the truth table. The same thing. Y is some 0 0 0 1. Answer is, final answer is x and 0 में you won't be having any same value, so it will be 0 at the end. All are 0. लेकिन इस केस में you will be having this bit as set, correct? मतलब 2 आएगा, x and 4. Are you guys getting what's happening? Hello, Kushi, how 3 10 or 3 is giving? See, this is, what is this value? This is 10, right? What is this value? This is 3, right? Just see the bitwise. यहाँ पे देखो 0 और 1 का और क्या है? 1 है ना. 0 1 और 1 का और क्या है? It is 1, right? So just see the final answer. It is 11, right? Are you getting it? Right? So जब bitwise AND देखो,
in this guy, like this is 10, this is 2, correct, and this is 2, correct. So ये चीज का काफी ध्यान देना होगा तुम लोग, like what's happening exactly. You guys will be finding a lot of things, lot of properties involved in this particular thing. Okay, let me run it. You can see that final answer is 2. But if I put it as 1, then it will be 0. Correct? Exactly what I told. Guys, is this making sense? Okay. Like, what will be the next operation? Like, I'll be teaching one more operation. Okay. That is bitwise or XOR. Okay, it will be like this. The notion is like this. Okay. ये थोड़ा different है. It is called exclusive OR. ठीक है. XOR का मतलब है exclusive OR. इसका मतलब कि if only there is only one bit that is set, then make the final bit set. अगर दोनों set है, don't make it. And if दोनों are not set, don't make it. It's like 0 or 0 is nothing but 0. 1 or 0, it will be 1. 0 or 1, it will be 1. 1 or 1, it will be 0. This is the truth table. Guys, making sense? Correct? Let me take an example. कुछ example बताओ यार. Like this. If you have some value like 1, 1, 0, 1. ठीक है? So just see x और y में क्या होने वाला है. You can see that it will be 1, it will be 1, it will be 1, and it will be 0. ठीक है? Let me see what is this value 10. इस value क्या है? What is this value? I think it is 13. है ना? देख के बताओ कोई. Guys, I think it's 13, right? So what is this value? Can anyone tell me? It will be 2, 4, 6, 7, 8. Right? देखो सबसे important यही है. Like सबसे important यही है because you will be having ample amount of questions on this. ठीक है? So let me just try this. If it is 10, the other one is 13. Let me just see what is OR. And let me just run it. You can see that 7, correct? It is 7, right? Hello? Are you guys there? Hello? ठीक है guys. One more thing. If you guys are enthusiastic, ठीक है? एक और चीज सीख सकते हो तुम लोग. Bitwise complement. इसमें क्या होने वाला है? Like this is a unary operator. ठीक है? These are called binary operators because they have 2 operands, right? Unary operator मतलब एक वैल्यू के सामने लगेगा. That is this. This is bitwise OR, right? So if you are 10, ठीक है? मतलब this is 10 ना in binary. So this guy will return exact opposite of it. मतलब in this way, like one's complement समझ लो. ठीक है? Cool. How did I type XOR symbol? Like function keys में देखना ऊपर होगा. ऐसे दिखने वाला है, right? The power वाला, right? It's like negate, but I just showed you for. So this thing, इसमें थोड़ा ध्यान देना. This is for only 4 bit ना. So only 4-bit value के लिए it will be shifted in this way. If at all it's a 32-bit, all these zeros will also be shifted to 1, causing it to a negative value. ठीक है? Cool. Shall we move? Hello. Chale guys. Okay guys. Okay. So now these are the pretty much the operators, man. The number of operators and all these things. I wanted to teach more, but I don't think time has. Okay, so I'll teach whatever I can. Okay. Okay. Yeah, let me just teach 2 more operators and let's do one question and then we can wrap up. Okay. So जल्दी करा देता हूँ. ठीक है. So you have something called shift operators.
right? See, these are called shift operators. Okay, what are shift operators are? Don't get confused. Okay, Java may have only the same thing. Okay, but I'm just talking in a general terms. Okay, so shift operators are two types of shift operators: left shift and right shift. Okay, like left shift is like this, and right shift is like this. Right. So if you have a value like this, just a 5-bit value like this. If I write this is x, for example, just a 5-bit value. If I write something like x shift left shift 2, it means that shift these values 2 times in this direction. ठीक है? क्या मतलब? 2 times shift. क्या मतलब है? If you shift it once, ठीक है? This value will be here, this value will be here, this value will be here, here, right? It's going to be somewhere like 0, 1, 1, 1. और यहाँ से एक 0 आएगा, right? It is going to be 0. This value is going to be vanished. ठीक है? ये गई बाद में, right? This is one shift, right? It will be shifted again. So it will be here, it will be here, it will be here, it will be here. It will be 1, 1, 1, 0, 0. So if you put a value like this, and if you left shift it, if you do x equals to x of left shift twice, it will be shifting it 2 times in this way. मतलब यहाँ से 2 bit जाएंगे and वहां से zeros आ जाएंगे. This is called shift operator, left shift operator. No. Don't confuse it with the C++. C++ that is different. That is operator overloading. ठीक है? C in left ऐसे मत करना. That is operator overloading. ठीक है? जैसे कि मेथड को ओवरलोड कर सकता है वैसे ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकता है. So don't confuse that with this. ठीक है? This is different. Guys, this is cool. ठीक है? I'll tell you, don't worry. ठीक है? देखो, if you have a value like 1, 0, 1, and let us assume it is it is what? It is a 6-bit value. Okay? This is x, 6-bit value. If I do left shift 2, it means that you are just shifting the bits to the left. मतलब एक शिफ्ट में क्या होने वाला है? ठीक है, ये होने वाला है. See, all these bits got shifted, right? Like these are the walls, right? So ये 0 गई कहीं और, and यहाँ से कोई और 0 आ गया, right? So you can see how the shifting has happened, right? Like you can see that 1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, and everything got shifted towards the left. This is one shift. And एक और बार shift करने के लिए, this is how the shift happens. 1 will be here, 0 will be here, 1 will be here, 0 will be here, 0 will be here. So this will be the final answer. So if you have this is the binary value inside x, if you shift it twice, it will be like this. That is what I'm explaining. Cool. Hello. चले? Shall we move forward? Hello. ठीक है? तो एक बार सोचना. What is the value of what is this value? Can you guys tell me what is this value? Normally बोल रहा हूँ, 2-3 bit का नहीं बोल रहा हूँ, normal integer का. 6 है, 5 है ना भाई? 6 कौन बोल रहा है? देखो हमें ये देखना कि लास्ट बिट 1 है तो ऑड नंबर होगा. ठीक है? So 5 value. So if this is x and if I left shift it once, what will be this value, guys? Can you tell me? If I put it into x again, it will be 1, 0, 1, 0. Correct? Guys, ये चीज समझ में आया? You're left shifting it, right? Left shifting में ये like only once I shifted, one time I shifted.
ईश्वर see 101 है ना, so if you are left shifting it, ठीक है, so like all these are zeros, right, till this point, ठीक है, and this will be shifted to one point, this will be positioned to one shift, and this will be shifted, and zero कैसे आएगा, and that will be shifted as well, so it will be 1010, correct? Ishwara, is that correct? नहीं, it's not a 3 bit, it's just an integer. Integer में 32 bits है. It's a 32 bit, ऋषिकेश. ठीक है, ठीक है. अभी देखो, like चल मैं एक बार शिफ्ट नहीं करूंगा. What if I shift it twice? तो क्या होने वाला आंसर? It is going to be like this. How many of you agree? Correct? Guys, just see this thing. Just see this magic. अगर मैं 101 है, if I multiply it with 10, मतलब 101, I'm talking about decimal value. It will be this one, right? So if I'm multiplying it with 10, it's a kind of shifting. Correct? The same way here as well. If you are shifting it with a value x, it is nothing but multiplying that value with this power of 2. जैसे पहली बार when I'm doing it with 1, ठीक है, what was that? X equals to x into 2 power 1. When I'm multiplying, when I'm shifting it power 2, it is nothing but x into 2 power 2. Correct? Just look at this value, it is 10. देखो, into 2. Just look at this value. What is this value? Can you tell me, guys? It is 20, na? Correct? Guys, this is just an observation. Okay? Positive or negative, I'll tell you about the sign. Okay? But it will be too much if I do it today itself. Okay? So I think we can stop, but I think we should yeah. So I'll talk about right shift after some time. Let's do some questions. Okay? Varna, like you guys won't be actually like too much theory ho gaya na. Correct? So shall we do one question? ठीक है, बहुत ज्यादा theory हो गया. So I'll skip this thing. I never skipped this right shift at the time, but there's already a lot of confusion between you guys regarding the negative numbers, positive numbers. So let's to cool down the mood. Let me do this thing. ठीक है? So guys, just look at this. ठीक है, ये बता रहा हूँ सबसे important. Right? I'm just saying, एक number ले लो. If you XOR it with 0, what will happen? It will be the same value, yeah. Correct? क्योंकि 0 जो भी होगा, right? So this is 0. If you XOR it with 0, right, it will be the same value. How many of you agree with me? Right? But if I XOR a same value with that value only, मतलब अगर ऐसा है, if I XOR it with the same value, x XOR x, what do you think will happen? 1 1 0 0 1 1 0 0. It will be 0 0 0 all the way, right? Don't you guys agree? Correct. So I'm just making a observation. X XOR x is equals to 0, and x XOR 0 is equals to x. Do you guys agree? ठीक है? Cool. Is everything cool? ठीक है? Using this observation, can I say something like this? X XOR x XOR x. What is this value? It will be x because these two things will be 0, right? And this will be left. 0 or x is 0. So the x XOR x XOR x XOR x. What will be this value? It will be 0, right? Because these guys will be 0. These guys will be 0 or 0 is 0, right? So I'm just saying, if you XOR the same value even number of times, it will be 0. If you XOR it odd number of times, it will be x. Do you guys agree with me? Odd number of times, ठीक है?
Cool. So let me do a question. It's a simple question. I'm not sure if you did this question, but I don't think you did it. So let me just open this question. Single number lead code. It's a very good question. We'll do this question and we'll close it today. Okay. So we didn't study anything actually today. Okay. So there you go. Like the question says, ki you are given a non-empty array of integers. Every number appears twice except once. Okay, find that single one. Okay, you must implement this solution with linear runtime complexity and do not accept this. Okay. So this is the question. So basically, brute force way guys, how to do this? How to do this question? The most brute force way. Most brute force way. जानबूझ के बताओ how to do this question. You're given, so let me tell you a question. Okay? You're given an array with all elements. Every element is having the frequency 2 except one element with frequency 1. How do you do it? Yes, nested loops. Okay? For each element, just check if there's any other element or not. Okay? हो गया? Correct? Are you guys getting this? N square. है ना? Second approach क्या हो गया? Hash map. Hash map में क्या find करेंगे? Value, key value pair with key as the value, I mean key as the item and it as a frequency, correct? So after that, iterate through the hash map to check if frequency is 2 or not. If it is 1, return the key. Do you guys agree? What is this time and space complexity? Big of n and big of n, correct? So there you go. Like you are here in module 2 or module 1, then you came to here in module 3, correct? But just because of bit manipulation, you will be going in one more level, that is 3, okay, where what you're going to do is just see this one. Just see this magic. If you have this array, 2 XOR 2 XOR 1, what do you think will become? You know that 2 XOR 2 is 0, right? And any value XOR 0 is nothing but 1, right? Correct? So if at all, I just told you, if at all you XOR the same element again and again with itself for an even number of times, it will become a 0 value. Correct? Or else it will become an odd value, right? It will be at the end, you'll be left only with the value which is odd. Correct? So same way, someone will go 4 XOR 1, XOR 2, XOR 1, XOR 2. Right? So guys, when you're XORing it, okay, so you like it is like you can XOR these two elements first and then XOR it with these two elements. That will be anyway there, right? Because XOR ka matlab kya hai? You're just laying out the bits in this way. Okay. So you're just laying out the bits in this way, right? So it will be 1, it will be 0, it will be 4. So you can XOR any of the values. At the end, only number of ones present at this location only matters, correct? Nice. Right? So you can see that 1 XOR 1 will leave the value 0. 2 XOR 2 will leave the value 0. Since every element is appearing twice, okay? So at the end you will be having everything 0 except the guy who is left single, and this guy will be returning the value. How cool is that? Could you be later, like any value, like 9 XOR 9, where 8 is 7, where 8 is 7, with some 1, with some 1, with some 2, 3, 2, 3, right? उसके बाद XOR 10. You can see that everything is paired up. This one will get cancelled. This one and this one will get cancelled. This one and this one will get cancelled. This. Only this guy will be left, and all the things will return 0, and zeros of this value is 10. How good is that, guys? Correct? Are you getting this? So in a way, in short, I just need to XOR all the elements of the array, and at that whatever I get, that will be my answer, because all the other elements will make itself 0. Isn't this cool? Correct? So
तो अभिषेक wants me to explain XOR again, ठीक है? So XOR में क्या होता है ना bro, ठीक है? If you have different elements, ठीक है, 1s or 2, it will be 1, ठीक है? Only then it will be 1. अगर दोनों सेम है, 1s और 1 है, 0s और 0, it will be 0, ठीक है? तो if you are XORing two elements, ठीक है, जो भी वैल्यू हो, they will be same at their bits, right? In the bit manipulation, they won't be changed, right? If the values are same. So if you XOR the same values, like they will be resultant only 0, right? Do you agree? बस वही है, like these values will be producing the bits at that particular location as same, so they will be just cancelling out and everything will be cancelled out except the value which is odd. सर if इसमें जीरो वैल्यू भी होता है तो ये भी काम नहीं करता ना, क्यों नहीं करते वो? जीरो होगा तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? एट द एंड जीरो ही मिलेगा ना हमें सागर. if at all there is another value called zero, if at all this is a single value, at the end you will be getting zero only. If zero is also having a pair, that will be zero as well. Any values or zero is the same value. Okay, so let me just clear all these things and let me just code it. Okay, jaldi code kar deta hu. So the answer is going to be 0, right? And let me just iterate to the values. Okay, and let me what I'll be doing is I'll be answer equals to answer XOR nums of I. I'm XORing all the elements one after the other to the answer variable. At the end, I'll return the answer variable. I'm sorry. Let me just play this. Nums dot length. Correct. क्या लिख दिया मैंने? It is working. Correct, guys. You can write it in this way as well, just like you write. ठीक है, जैसे तुम लिखते हो प्लस लिखते हो ना, उसकी जगह you can write this one as well. Correct. Hello, is this clear? ठीक है, if you want me to try run this, yeah, I can try run this. Not a big deal. ठीक है, तो आंसर मेरा देखो, आंसर मेरा see, for example, let me try run for this particular array. ठीक है, my answer is 0, right? What I'm doing, I'm XORing all the elements. ठीक है, zeros और 4, ठीक है, zeros और 1, उसके बाद XOR 2, उसके बाद XOR 1 करते ही this value will be taken off. ठीक है, मतलब ये 0 हो जाएंगे, everything will be 0, right? उसके बाद if I XOR 2, right, 2 will be get cancelled, right, because it is having the frequency even. At the end, I'll be left with zeros or 4, which is nothing but 4. So I got the answer, which is single. Correct. So if we initialize it with 1, obviously 1 बचेगा ना, तो 1s और 4 मिलेगा मुझे, which is wrong, obviously. Correct. So that's for today, guys. Okay, I'll send all the codes and everything. We learned a lot of theory today. तो कुछ और सीख नहीं पाए. I'm sorry for that, but cool. ठीक है, it's fine, happens. ठीक है. ठीक है, या कल पूरा अच्छी तरह से जितना हो पाएगा I'll send you whatever the links are which are with me. ठीक है, I'll send you just read those articles, ठीक है, about the operators and all those things. I think it will help you. ठीक है, we'll learn few more topics. There are few more topics left. It's a huge topic actually. ठीक है, ठीक है, we can have a class on Sunday. ठीक है, कल I'll be traveling, right? On Sunday we'll be doing Qs and DQs. ठीक है,
ठीक है. So good night for today. Okay. And I'll send you all the questions and yeah, bye bye. काफी सीखा. Nice. ठीक है. We learned lot of things out of the syllabus actually. बहुत सारे number systems के बारे में and unsigned integers के बारे में. They are not very relevant, but it's just theoretical knowledge that you are going to gain from it. ठीक है. So why is answer not equals to 1? Sorry, Chirag. It is answer is equals to 1 now. See, 2's or 1. It will be 1 at the end. Where is answer not equals to 1? I'll just send a few questions. Lekin I don't think you guys will be able to solve few more questions again. इतना ही कर पाओगे. हाँ. Hello. Yeah, hi Chirag, बताओ. Hello. In line third, you initialize answer equals to 0. If we initialize answer equals to 1, then what will happen? What will happen? Answer एक और 1 आएगा तुम्हारे पास. मतलब जो भी आंसर है, जैसे इस केस में 4 आंसर है तो 1 और 4 आएगा आंसर. Okay. ये क्या क्वेश्चन है? नहीं, ये पूछ रहा था एक्चुअली, आपने बताया था, मैंने सुना नहीं था उस टाइम पे. अच्छा देखो, 1 और एनी वैल्यू विल चेंज, ठीक है, लेकिन 0 और एनी वैल्यू वोंट चेंज, इसलिए मैं 0 लिया ना. ओके. है ना, समझ रहे हो? ठीक है. चलो गाइस, लेट्स रैप अप टुडे. ठीक है, बस करता है इसके लिए. ठीक है, वी कैन डिस्कस टुमारो. ठीक है, एंड गुड नाइट. Unmute. Mohit wants to get unmute. Man, what happened, Mohit? हेलो सर. हाँ, हाय मोहित, बताओ. सर आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? मैं इतने टाइम से अनम्यूट के लिए बोल रहा हूँ. नहीं ब्रो, देखो इतना ज्यादा स्पैम होता है कि लाइक मैसेज गेट स्क्रॉल्ड अप. ठीक है, लाइक जो भी एक्चुअली में मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहा है, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग देम. एंड लाइक इफ यू गाइस आर रेजिंग हैंड्स, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई यू गाइस वांट टू. मैंने स्टार्टिंग से ही रेज हैंड किया हुआ है, मुझे बीच में डाउट्स आ रहे थे, तो अब उस टाइम पे तो अरे देखो, like there's another reason why I'm not unmuting is कि like if I'm teaching something, right? So if at all like I keep on taking the doubts in between, unless there's a kind of checkpoint present, like if at all I completed certain topic and आपको then ऐसा तो करना चाहिए ना कि एक जैसे आपने कोई भी टॉपिक क्लियर कराया, उसके बाद एक बार अनम्यूट करके सभी से डिस्कस करें कि yeah sure, that's what I'm saying. सर हर कोई चैट पर नहीं डिस्कस पूरा बात बोल पाता अपनी, तो एक बार अनम्यूट करके अपनी डिसीजन शेयर कर सकते. देखो जितना मैं अनम्यूट करता हूँ ऐसे, like I don't think कि anyone like wants to unmute few people because that will kind of break the flow of the class. तो वो दिमाग में रख के I don't unmute. ठीक है, so अब बताओ कुछ डाउट है क्या तुम्हें? यस सर, अभी जो सब ड्राई रन कराया है वहाँ पर कुछ डाउट था, एक बार क्वेश्चन शेयर दिखा सकते हैं आप? बताओ. ड्राई रन सर, ड्राई रन में 4 और 0 पहले फर्स्ट हम आंसर में हमारा 0 है. करेक्ट. और नम्स आई 4 को डिनोट करेगा ना सर? सॉरी, नम्स आई जो है वो 4 को डिनोट करेगा ना? नम्स आई 4 को क्यों डिनोट करेगा? लाइन नंबर 6. लाइन नंबर 6 में nums i will be telling 4 पहले बार देगा, उसके बाद 1 देगा, उसके बाद 2 देगा, उसके बाद 1 देगा. सर पहले 0 और 4 को 0 और 4 को देगा ना स्टार्टिंग में, तो एक एक करके चेक करेगा ना. तो nums of 0 is 4. ठीक है, ये बोल लो. ठीक है, the same way nums of 1 will be 1. ओके, 4 और 1 का क्या होगा सर? 4 ऑपरेटर, और अगर इनके बीच में जोड़ करते हैं 4 और 1 का जोर जो बनेगा बनेगा. ठीक है, उसके बाद तुम 2 करो, उसका भी जो जोर बनेगा वो बनेगा. जस्ट टेक द एग्जांपल. ठीक है, लेकिन जोर 1 करोगे, like at the point where this bit is present, they will get cancelled. Like doesn't matter what this value is, you can just try it. ठीक है, doesn't matter what this value is, if you zor 1 with it, ठीक है, since this particular guy is producing a bit at certain position, the same position even this guy is producing, so they will kind of like become 0 at the end. सेम अगर सेम होगा जोर में, तो वो तो 0 को रिटर्न करेगा ना. आई थिंक
किसको रिटर्न करेगा? सर अगर जोर सेम वैल्यू को हम जोर कराते हैं तो वो 0 को प्रेजेंट करेगा। करेक्ट करेक्ट. So Okay, if you sir. if you XOR 2 again, then हाँ, this will 2 और both 2 will be को kind of 0. 0 कर देगा, 4 हमारा And आंसर। 4 will be the only guy left because there's no one to pair with them. Correct? ओके हाँ, डाउट क्या है इसमें? बस सर यही डाउट था ना कि मतलब कि 4 के बाद पहले हम 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर 4 No, we स्टोर are हो not जाएगा comparing. We are just zoring it. We are हाँ, zoring जोर it into a variable, है ना? जोर हाँ, करेंगे तो तो वो आंसर में स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 को फिर ऐसे एक एक करके इटरेट करेंगे। आप बोल रहे कि मैं लगातार होता चला जाएगा कि 1 4 2 1 इस टाइप या से मतलब जो भी वैल्यू बनेगा है ना, तुम अब प्रिंट करोगे आंसर को तो कुछ और ही आंसर वैल्यू में होगा. स्टोर होगा, फिर उसके बाद हाँ, नेक्स्ट डिजिट आएगी, फिर उसके बाद तो नेक्स्ट डिजिट इसको तुम जोर करोगे 1 के साथ, इट विल बी सम वैल्यू लाइक दिस 5 बनेगा, है ना? जिसको तुम 2 के साथ जोर करोगे तो 7 बनेगा. तो इसको प्रिंट करके देखो, 4 पहले होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा. ठीक है, दैट इज करेक्ट. लेकिन जब तुम 1 करोगे जोर, इट विल बी काइंड ऑफ जोरिंग दिस अवे, है ना? सो एट द एंड इट विल बी रिवर्टिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट जोर हैज कॉस्ट, of XOR with 1 has cost in the first place. Make sense? यस सर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो cool. चलो मैम, I'm just ending the class. ठीक है. चलो, I'm ending the class, guys. I'll send all the docs. ठीक है. Bye bye.